Hello, everyone, and welcome to another episode of Vimo Live. This is a live stream slash podcast that happens on Wednesdays and Saturdays at 9:30 p.m. here on youtube.com slash Vimo Live. It's also simultaneously broadcast on twitch.tv slash Vimo Live. And you may also be listening to this at a later point of time as audio. If you are doing so, you are probably using Spotify, Google Podcast, Ghana.com, Apple Podcast, Geo7. I messed up the order today. I don't know why. But yeah, you may be using some of these apps or something else. And if you are using an audio app, please s- take a moment to give the podcast a rating or a review because that really helps more people discover the show. And I thank you in advance for listening to the audio show. This channel is monetized. If you want to become a member, you can do what Abhishek Jha just did. Thank you, Abhishek, and become a member of the channel. Your support helps me buy books, buy software, and pay my bills. I'm a full time content creator, and your support is really appreciated. The join button is below this video and on the main page of the channel. In addition, something else that is cool has happened recently. If you go to the main page of this channel, you will find a on the top where the tabs are, the playlist and the channel video tabs. You will also find a store tab now. When you click on the store tab, you will be taken to my merch store, which is like on the channel. But if you want to visit the merch store separately, you can do that at kadakmerch.com slash live. That's kadakmerch.com slash live. You'll find two shirts. You'll find t-shirts, hoodies, and mugs. So check out the store tab on the main page of this channel and see if you like something. By buying any of the products there, you'll also be supporting this channel. If you want to support this channel on Patreon, you can do so at patreon.com slash Vimo. And if you want to support this channel with a one-time donation and not have to subscribe to any monthly scheme, you can do so at vimo.stck.me. There's a support button. You can just pay an amount of your choice. And with that out of the way, I thank everyone who's here today. Wow. Okay, a bunch of spam followers have followed on StreamYard, but that's okay, I suppose. Something or the other is happening. The link pinned to the chat is the one that you need to click in order to come on screen and talk. If you want to keep your webcam on, that's okay. If you don't want to, that's also okay. I only request that you don't abuse the privilege of being here. I will get to all the people who are in the chat. Let me just read a couple of comments before I do that. Uh, First of all, Abhishek, thank you for becoming a member again. Much appreciated. Arun is answering a question by someone else about anime shows. Okay, thank you for doing that. Arun says some video called "Reject Modernity, Embrace Masculinity" showed up on my homepage. Okay, share the video with me, man. It'll be fun to watch. Kailash says hello. Anonymous says hello. Confused Ape says hi. Abhishek says, Vimo, punctuality or passion? Punctuality will serve you longer. Passion is fleeting, it comes and goes. Jashmit says, how the creative writing going, bro? The word count has come down, bro, from 1000 to about 400 words every day. But this is Preptober and NaNoWriMo is coming up, so I hope to pick up my pace. Confused App says, please do more content on Vimo Explains. I will do so, sir. But, it's 3 channel है, manage करना मुश्किल हो जाता है. Sarvesh says hello. Aditya says hello. Diamond Amar says identity pride is a dangerous thing. Like we see the dangerous manifestations of religious pride or cultural pride, but there is also pride in LGBTQA. What is your opinion on identity pride? Not all identity pride is bad. Sometimes people express pride because they are being subjugated, and it is important for them to reclaim the normal human status. Sometimes people exercise pride because it helps them dominate other people. That is bad. So it depends on the context. यूसुफ सेज हाय विमो रेनिंग एट योर प्लेस ऑल्सो समटाइम्स मतलब पूरे दिन आजकल तो रेनी सीजन ही चल रहा है कहीं कहीं होता है कहीं कहीं नहीं होता है M23VR says read tragic tale of the centrist on your read tragic tale of the centrist on your blog today. Could you explain that in the context of political spectrum? I don't know which one you're talking to. I've written about centrism a bunch of times. Do you mean that centrism alone is not possible, or one could be center left or center right? I'm really weirded out by people who say center right and center left. Like, what do they mean? मतलब मैं सेंटर पे हूँ पर मैं राइट पे हूँ, मैं सेंटर पे हूँ पर मैं लेफ्ट पे हूँ, सीधे सीधे लेफ्ट या राइट बोलो ना, ये क्या सेंटर लेफ्ट लगा रखा है? Right. So I will take on callers now. Abhishek is first. Hi Abhishek, what's up? Hi, Vimo.
हाय। माय व्हाट्सअप, क्या क्वेश्चन चल रहा वाज पंक्चुअलिटी और पैशन, वो इसलिए आप टाइम पे आए ना। है? अच्छा। मैं पूछ रहा था कि पैशन की वजह से आते हैं आप टाइम पे या पंक्चुअलिटी की वजह से। पैशन किसी प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए बहुत अच्छा होता है, पर हम्म पैशन के बल पे आप किसी प्रोजेक्ट को मेंटेन नहीं कर सकते। पैशन आता जाता रहता है, कभी कभी ज़्यादा पैशनेट होता हूँ, कभी कभी कम होता हूँ, बट पंक्चुअलिटी इज़ अ हम्म थिंग दैट विल कीप यू ऑन ट्रैक। या सो मेरा डिसिप्लिन मोस्टली वुड बी अ मोस्टली बेटर पंक वर्ड, या राइट? या डिसिप्लिन। डिसिप्लिन विल टेक यू वेयर इंस्पिरेशन विल नॉट। इंस्पिरेशन, मोटिवेशन, इंस्पिरेशन आई थिंक इज मैं समथिंग दैट राइटिंग स्टेज टर्म्स में बात लॉन्ग। कर रहा हूँ। राइटर्स बोलते हैं ना, मैं इंस्पायर्ड नहीं हूँ, मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, तो उनको ओह सही बात। उल्टे हाथ का झापड़ पड़ना चाहिए, बोला चुपचाप बैठ के लिख। इंस्पिरेशन बिरयानी है, कभी कभी आता है। इफ़ यू गेट बिरयानी वंडरफुल, बट मोस्टली तुमको हर रोज़ दलिया खाना पड़ेगा। और दलिया या खाओगे तो हो सकता है कभी कभी, अगर दलिया खाओगे तो जिंदा रहोगे, और हो सकता है बाद में कभी बिरयानी खा पाओ। पर बिरयानी के इंतजार में बैठे रहोगे तो हम्म कल हफ्ते भर बाद मर जाओगे और दलिया भी खाने को नहीं मिलेगा। सो डिसिप्लिन आई थिंक इज हम्म मोर इम्पोर्टेंट। या हैबिट्स आर मोर इम्पोर्टेंट देन एनीथिंग ना, गुड यस, हैबिट्स। यस, यस। आई वांटेड टू मेनी टॉक हैव। अबाउट जो हो रहा था ना अभी कमेंट्स पे। क्या कह रहे हैं आप? हाँ, नहीं नहीं, कुछ नहीं, बोलो क्या बोले थे। वो अभी जो कमेंट पे हो रहा था वो हल्ला, यू वर कौन सा? फॉलोइंग दैट अभी लास्ट वीडियो पे? इस चैनल के कमेंट्स? हाँ हाँ, लास्ट वीडियो पे, लास्ट डेमो लाइव वीडियो। अच्छा, अद्वैत वेदांत वाला। हम्म अरे लास्ट जो फिर हमने कॉन्वर्सेशन किया पिछले सैटरडे को। अ, आई आई एडमिट, मैं पिछले सैटरडे से अब तक मेन चैनल पे थोड़ा बिजी था, इस चैनल के कमेंट्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाया हूँ। आर यू टॉकिंग अबाउट समथिंग नहीं, स्पेसिफिक? I'm talking about the dogmatic comments made against you that you pointed out in some other video. ओह या नाउ आई रिमेंबर, हाँ, एक का Yeah, जवाब दिया था मैंने, yeah. हाँ। और So वो you भी were following इम्पेशेंटली that. दिया था। सो टू Hmm. एक्सप्लेन टू एवरीवन हु इज़ हियर, किसी ने आके कुछ तो झाड़ा था ज्ञान, वही सब ओल्ड फैशन पेलागिरी हो रहा था, और बाद में बोला कि विमो हैज़ Hmm. डॉगमेटिकली रिजेक्टेड आइडियलिज्म। और मेरे पास उसका पूरा कमेंट पढ़ने को टाइम नहीं था। मैंने बोला भाई तेरे को जो बोलना है लाइव पे आ जा, सीधे से फेस टू फेस बोल, आई एड्रेस, इफ यू हैव अ पॉइंट आई विल Hmm. अपोलोजाइज, दैट्स ऑल। Yeah, सो I क्या was the तुम one उसमें? having the conversation with him ना, तो ओके, उसी पे सो व्हाट बात वाज हो इट रही थी। लाइक? व्हाट वाज इट लाइक? It was मतलब it just मतलब उसकी जो वांट थी चीज को कॉम्प्लेक्स करने की, मतलब हाँ, वही मैंने कमेंट किया ना आपकी वीडियो पे जो विमो चैनल पे है, जो मेन चैनल हाँ, पे है, कि हुँ, मतलब विदाउट अंडरस्टैंडिंग द सिंपलेस्ट आंसर फर्स्ट, एंड मतलब चीजों को और कॉम्प्लेक्स बनाना, मैक्सवेल इक्वेशंस एंड दिस एंड दैट एंड कलर इज द प्रिमिटिव मॉडलिंग ऑफ क्वालिया, यू नो मतलब कहीं या, भी चले जाओ बात, जो मेन बात जो चल रही है उस बात से तो कहीं और ही चले गए। हाँ, मतलब कलर कलर के बारे में ही बात हो रही थी, बट मतलब मैक्सवेल इक्वेशन घुस गया उसमें, फिर उसमें पता नहीं क्या क्या घुस गया। और फिर वो जो हाँ। जो जो बंदा क्वेश्चन पूछ रहा था शरत, एक्चुअली वो ही कंफ्यूज हो गया था कि वो क्या पूछ रहा था, एंड ही शरद के गॉट बारे में कंफ्यूज तो शरद के बिटवीन। बारे में मैंने एक चीज़ नोट की, शरद वाज़ ऑनेस्ट। Like ही he वाज he ऑनेस्ट। he's या he's exploring a possibility, and when he thinks that okay, so मैं जिस ब्रिज पे चल रहा था वो ब्रिज यहाँ से टूटा हुआ है, मैं आगे चल के नहीं जा पाऊँगा, he'll say okay मैं नहीं जा पाऊँगा, मैं घूम जाऊँगा। ये लोग छलांग मार देंगे, नदी में गिरेंगे, बोलेंगे मैं अब भी ब्रिज में हूँ। एंड ही वाज मतलब ह्यूमिलिटी की बात तो है कि आई वाज हैविंग अ कन्वर्सेशन विद हिम इन द कमेंट सेक्शन ओनली, एंड हुँ, बिकॉज आई थिंक आई कंफ्यूज्ड हिम राइटली और रॉन्गली, एंड ही ओके। कमेंटेड ऑन योर वीडियो कि हाय विमो, मैं मतलब हाँ, हाँ, आई वुड थिंक अबाउट इट मोर, नॉट दैट आई हुँ, वाज मोर करेक्ट, मे बी आई वाजंट, but हुँ, he's really curious about things, so he wants to make everything clear to himself. That is a really great thing या, उसके बारे में। एंड बाकी लोग मतलब कूद पड़े थे कि मतलब मतलब दूसरों को ज्यादा अच्छे से पता था कि वो क्या कह रहा था, मतलब हाँ, they know कि Sarath was talking about the explanatory gap and this and that, and it's an हुँ, in argument made against idealist and या। dualist, वो एंड कमेंट पढ़े थे इवेंचुअली दीज़ थिंग्स आर नॉट वेरी यूज़फुल, क्योंकि अगर मैं शरद से बात कर रहा हूँ या किसी भी से आदमी से बात कर रहा हूँ, और हम्म मैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू को समझना चाहता हूँ, तो मैं उससे बात करूँगा। क्योंकि एवरी या टाइम पीपल स्टार्ट रीडिंग मीनिंग्स इनटू समवन एल्स, वेदर दे डिसएग्री विद देम और एग्री विद देम, द कन्वर्सेशन गोज़ डाउनहिल। इट जस्ट ओवर या कॉम्प्लिकेट्स थिंग्स। उसने कहा एबीसी, तुम आओगे बोलेगा वो असल में डीईएफ भी बोलने वाला था। भैया वो अगर डीईएफ बोलना होगा मैं उससे अलग से बात कर लूँगा। तुम वो तो तुम्हारा क्या ओपिनियन है? उसको एक्सप्लेन करने मत जाओ। या या I mean, Sharath was asking in the beginning कि मतलब he asked I think कि how brain generates color. We still don't know that.
And I Hmm. pointed out कि मतलब we have got We do know that. Yeah. no, no, we know that to some extent. No, Hmm. our eyes are three cone SLM, right? They are differently structured to मतलब perceive a certain wavelength. Hmm. मतलब जो ये तीन कोन्स है SLM, ये हमारी आंखों के Hmm. पीछे कोन्स होते हैं जो एक्चुअली Hmm. परसीव करने में हेल्प करते हैं डिफरेंट वेवलेंथ्स को. Hmm. तो शरत ने बोला कि व्हाट अबाउट कलर ब्लाइंड पीपल. सो आई सेड कि मतलब कलर ब्लाइंड पीपल हैव वन ऑफ दीस कोन्स मिसिंग एंड दैट इज Hmm. you can search that on the web and there is no doubt about that. you know Hmm. Either one of those cones are missing or it's damaged. you know Yeah. तो मतलब इस वजह से मतलब देयर इज क्वाइट अ बिट ऑफ रिसर्च ऑन दैट. सो आई टॉक्ड अबाउट इट एंड देन ही गॉट कंफ्यूज्ड कि मतलब थोड़ा सा और मे बी देयर इज मोर दैट ही कुड रीड अबाउट एंड देन मे बी Yeah. उसकी कंफ्यूजन थोड़ी कम हो Yeah. जाए. Yeah. Yeah. यू नो Hmm. मतलब एवोल्यूशन ने हमें हमें ट्रेन किया है कि मतलब वेवलेंथ को हम डिफरेंशिएट कर सके. तो उसके लिए कलर एक एवोल्यूशन एवोल्यूशन स्टैंड पॉइंट से मतलब आया है ना. मतलब it became it became just a signal to us that this is of a certain wavelength to Yeah. differentiate between different wavelengths, right? Yep. What do you think about that? I think so. I would rather not speculate about why we got the ability to distinguish between colors. I think it was useful in some ways. It was useful in Hmm. telling the difference between a leaf and a flower, or a Yeah. rock and the sky, I suppose. Uh, but it's a slippery slope when we try to explain things based on how useful they are to us, because sometimes that is not the case. Sometimes things are just random. Like, No, we things have an are, ability. We and have it's an not that ability we are. Yeah, yeah. Say, like, the ability to continue. perceive color did not Mm-hmm. get in the way of us finding a mate. If anything, it probably helped people be more artistic, right? Mm-hmm. So Mm-hmm. maybe it increased the chances of people getting a mate. So yeah, evolutionarily, the fact I am only basing my arguments on the fact that we are able to see color. Why we are able to see Yeah, I color? was just If you pointing look in out our कि brain or how a the body, you will eye find some works. reasons. Yeah, how the eye works. I was pointing out to that. कि मतलब That's all. Yeah, yeah, yeah. SLM are the cones we possess, but there are Hmm. creatures who possess more cones than us, and Yeah, yeah. everybody can read about that. And there are And there if there are creatures who have got less. So, yeah, huh. honeybees have compound eyes, and the way they perceive color is like mind blowing. There are YouTube videos Okay. about how what a flower looks like to a bee. Mhm. If you watch it, you will want to be a bee. Yeah. Yeah, one of the things I wrote in the comment, maybe there is a bit of disagreement with you also in that. Hmm. Otherwise, I'm Hmm. completely in the same space as you are. हाँ, कि बोलो. It may be the case that what I call red may be Hmm. blue for you. What I Hmm. call yellow may be orange for you. That can be the case Hmm. because we do not have predetermined, perceptive signals already attached to us before we are born. We don't have Yeah. them. Yeah. So it's maybe our neurons have learned to attach कि वो wavelength को किस किस तरह से देखना है. That perception can be very different for different people. Yeah. But Yeah. that does not mean that the effect of the color will be different for us. And I don't Hmm. know if you read my comment. मैंने blue light का एक example लिया था कि take for example blue light, Hmm. and we all know that blue light disrupts our sleep quality, right? It does. We all know that maybe what I am calling blue may be looking orange to you because that's how your Does blue brain. light really is blue light really injurious to your eyes or disrupt your sleep? Because I seem to remember something from some time ago that said that that is not the case. No, no, it is the case till now. I as Okay. much as I know, maybe you can. If there is something else, you can tell me also. I'll know No, no. more. I used to think that मैंने ये चीज इसी हफ्ते पढ़ी. Hold on, let me see. Hmm. Okay, 5 days ago, worries over blue light exposure lead to new safety ratings for screens. Can blue light harm your skin? 8 blue light. Be careful of blue light. नहीं यार, यहाँ पे तो कुछ आ नहीं रहा है, बट मुझे लगा मैंने हफ्ते भर पहले कुछ पढ़ा था. बट एनीवे, नेवर माइंड. गो ऑन. Now I've listened to scientists on that. There is a sleep scientist, sleep doctor, Hmm. I would say rather, Matthew Walker. तो वो Okay. मतलब बहुत फेमस है. उनकी किताब द साइंस ऑफ स्लीप बहुत फेमस है. Hmm. He Hmm. came on the Joe Rogan as well. He's just a man famous for sleep. क्या बात है मतलब वो सोने के लिए बताने के लिए फेमस है कैसे सोते हैं. Hmm. तो उसके लिए मतलब बहुत अच्छी बात है कि हम अच्छा. उस लेवल पे जा रहे हैं कि किसी चीज में हम घुस जाते हैं. तो Yeah. that's good.
बट उन्होंने वही बताया था कि मतलब ब्लू लाइट के बारे में, और देयर इज अनदर न्यूरो साइंटिस्ट, आई थिंक सैम हैरिस आल्सो टॉक्ड अबाउट इट इन वन ऑफ हिज पॉडकास्ट, जो उनके सुनते हैं ना, उनके जो Hmm. बनते हैं जो यूट्यूब पे Hmm. नहीं आते, मतलब Hmm. अपने जो निकालते हैं ना, सैम हैरिस डॉट Yeah, ऑर्ग yeah, पे। yeah, yeah, yeah. या तो मतलब ब्लू लाइट की वजह से होता है, तो मैं ये कह रहा था कि ब्लू लाइट डिस्टर्ब्स आवर स्लीप क्वालिटी. The effect of the blue light will be same even if my blue is actually orange in your eyes, but Got it, got it. it, I got it. okay, Hmm. it will be the same कि मतलब आपके न्यूरॉन्स ने अलग Let's do तरीके a quick से. check now, Abhishek. What color is my shirt? रेड. Okay, so I suppose we are both on the same page. मतलब वो चीज ना, आई थिंक व्हाट दैट इज कि दैट गोज इनटू, जैसे मैंने अभी कहा कि आपकी शर्ट रेड है, ठीक है, Hmm. और आपने जो वेवलेंथ को रेड समझा, Hmm. हाँ, मे बी, मतलब वो आपके परसेप्शन में दूसरी चीज है, बट ऑन अ कलेक्टिव लेवल Hmm. इट्स वेरी हार्ड टू, मतलब मतलब जो आपके परसेप्शन में रेड है ना, Hmm. वो हो सकता है कि उसमें थोड़ी सी लाइटनेस ज्यादा हो, डार्कनेस कम हो. ओके. Okay. Okay. मैं जो हाँ, रेड so देख you're रहा हूँ saying आपके शर्ट पे. largely अगर रेड का कोई डिफाइनिंग ब्रैकेट है कि ये रेड यहाँ से शुरू होता है यहाँ खत्म होता है, हम सबके लिए रेड उस इस ब्रैकेट के अंदर कहीं भी हो सकता है. That's what you're saying? कहीं भी हो सकता है. मोस्ट हो पीपल. सकता है तुमको हाँ. ये थोड़ा लाइट रेड लग रहा हो और मुझे थोड़ा डार्क रेड लग रहा हो. या ओके, आई गॉट इट. आई गॉट इट. This is a concept of the inverted spectrum that Sarath pointed out. कि inverted हम्म. spectrum में क्या होता है कि मतलब अगर आप सडनली दुनिया को उल्टी घुमा देते हो उनके, मतलब वो एक अलग पूरी बुक है उस पे, मतलब हम्म. इन्वर्टेड स्पेक्ट्रम पे, कि आप हम्म. मतलब पूरा का पूरा स्पेक्ट्रम ही ऑल्टर कर देते हो अगर, तो ओके. मतलब आपका जो दिमाग है वो आपको कंफ्यूज नहीं होने देगा उस बारे हम्म. में, कि मतलब हम्म. पूरा, क्योंकि सब बोल रहे हैं कि ये ग्रीन अचानक से ब्लू हो गया है, और आप भी बोलने लग जाओगे कि ब्लू हो गया, और वो इतना हो जाएगा कि मतलब आपके जो सब स्ट्रक्चर्स है आपके दिमाग में वहां तक बहुत जल्दी पहुंच जाता है और वो एस्टैब्लिश हो गॉट इट. जाता है. ओके, हम्म. ओके. सो ये है कि मतलब व्हाट आई एम सीइंग एज रेड मे बी हम्म. लाइटर फॉर मी एंड डार्कर फॉर यू, एंड गॉट इट. गॉट इट. दैट कैन बिकम हायर डिपेंडिंग अपॉन कि आप किधर बड़े हुए और वहां पे लोग ग्रीन क्या बोलते हैं या रेड क्या हम्म. बोलते हैं. मान लीजिए कि कोई मतलब समझ गया, समझ गया. अ, अभिषेक, हाँ, समझ गया, समझ. आपका पॉइंट आ गया. इस टॉपिक के ऊपर हम लोग बहुत टाइम बहुत मतलब स्पेंड कर चुके हैं. कोई और पॉइंट है क्या? नहीं नहीं, ये मतलब ये मैं कह रहा था कि इस पे बहुत डिस्कशन चल रही थी, एंड इट वाज अ सिंपल थिंग, एंड ओके. पीपल वर मेकिंग इट मोर एंड मोर कॉम्प्लेक्स, कि मतलब मैक्सवेल इक्वेशन, एंड हाँ, वो तो वही होता मतलब है. मेरे को हाँ. बस हंसी आ गई कि मतलब कलर अच्छा. इज द प्रिमिटिव. वन ऑफ द पीपल व्हाट ही सेड कि कलर ब्लाइंडनेस इज अ स्टैटिस्टिकल डेविएशन, is it हम्म. was written by one of the, it हम्म. is a statistical deviation, and you can call it a statistical deviation if you do not want to consider the fact that it's actually caused by something missing. हम्म. वो होता है ना कि हम जैसे नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं कि वो उसकी कमी नहीं है, वो उसकी स्पेशलिटी है, ऐसे बोलते या नहीं या है कि या मतलब या या उसके या. पास एक हाथ नहीं है, वो उसकी स्पेशलिटी है, स्पेशली एबल्ड है वो. तो हम्म. मतलब पहले उस बात को तो आप कंसिडर कर लो कि वो मिसिंग है, फिर हम या बात करेंगे ना कि उसके बारे में वो क्या खास बना रही है, कि उसकी एक आंख है, मे बी ही इज नाउ ही कैन परसीव मोर, मे बी, यू नो, या या. इट्स नॉट द केस, बट मैं कह रहा हूँ ऐसे ही कि मतलब कई बार इनफैक्ट कलर कई ब्लाइंड. कई हाउ डू आई पुट इट, कई न्यूरो डाइवर्जेंट कम्युनिटीज में या कई कम्युनिटीज में व्हिच आर इवन सपोजिटली लाइक दे हैव an arm missing or a leg missing, they often, like I have seen this in at least uh, people who are unable to hear. They say that we don't want to be able to hear. If you are born without the ability to hear and you have spent 20-30 years of life without the ability to hear, many of them decide not to go for the ability to hear because their entire life has been built around their so-called disability. They don't consider themselves disabled, they consider themselves differently abled. and they might be fearful of the possibility of hearing perhaps, कि मतलब सडनली That उनकी is one दुनिया ही बदल possibility, but जाएगी. at the end of the day, if a person is wanting to make a decision for themselves, हम्म. a person who has never heard anything, their life is a हम्म. certain way, and they may be someone who has adjusted it to it.
Maybe when you tell them we are giving you the ability to hear, they can't even comprehend what is being told. So at the end of the day, it is their decision, right? But you're also fearful of the possibility. Like sometimes I'm having a conversation with my father, and some of the Hmm. things that I'm saying are new for him. Hmm. He just Hmm. doesn't want to listen to them because उनके beliefs टूटने लगते हैं. मतलब उनके दैट उनकी इज ट्रू, entire दैट इज ट्रू, world. विच इज वाई Uh, आई एम लाइक, बहुत से लोग ऐसे कहते हैं ना कि अगर तो सोसाइटी में कुछ लोग हैं जो कि गलत सोचते हैं, तो उनको हम्म, जबरदस्ती एजुकेट, जैसे चाइना हैज दिस री एजुकेशन कैंप्स, राइट, एटसेट्रा। देयर मे बी पीपल हु हैव, re-education camp. या वो जो लोगों को जबरदस्ती भर के उनके अंदर से रिलीजन निकालने की कोशिश करते हैं, व्हिच इज टिपिकल चाइना, आई सपोज। सो आई एम नॉट अ ह्यूज रिलीजन फैन ऑफ निकालने दिस की कोशिश अप्रोच। करते हैं इन मतलब व्हाट उनको वे, उनको थोड़ा बताओगे? उन उनको जबरदस्ती रिलीजन छोड़ने के लिए बाध्य करते हैं। अच्छा, अच्छा, या नॉट इन अ सो प्रोपेगेंडा वे, जैसे हिटलर ने एग्जैक्टली, किया था, सो ठीक है? या अच्छा, वैसे ही। एजुकेशन नहीं होता, हाँ। सो you and I may be of the opinion that religion is a bad thing, but I am definitely not of the opinion that people should be forced to abandon their Oh, religion, because that only creates yeah. more problems. The solution is to educate them, spread awareness, and expect that more people will be, you know create a nice place here so that when people leave there, they can come here. Don't go there and destroy their house and then say, अब तुम्हारे पास कोई जगह ही नहीं, तुमको यहाँ पे आना ही पड़ेगा. And I think the So more you try to force religion out of people, na, the more you are actually making them believe in religion in some way. yeah, yeah, That is what that I you're think. कि feeding the मतलब, persecution complex. कई रिलीजन में ये persecution complex है, हिंदुओं में है, मुसलमानों में है, क्रिश्चियंस में है. अरे यार, दुनिया क्रिश्चियनिटी खतरे में, इस्लाम खतरे में, हिंदुइज्म खतरे में. You're only feeding that. And in fact, yeah. when political quarters do this, when they try to force social change, what they are हम्म, expecting is not that social change will happen. They're expecting that those people will get violent, and then we will have even more reason to attack them. We will say, देखा, हम तो पहले ही बोल रहे थे ये लोग violent थे. ये बहुत किया जाता हम्म. है. And इसीलिए what the social change current cannot be forced. ruling parties are doing, कि मतलब वो वही कर, they are not actually forcing, ना, they are creating ways of telling people कि you have been misled till now, as Yeah, a yeah, religion you have been misled till now, and तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है, even though तुमको पता नहीं है कि बुरा हुआ कब है, क्या हुआ है, but तुम्हारे साथ क्या बहुत हुआ है, बुरा हाँ. हुआ है. हाँ, हाँ. आप पूछो मत कि क्या बुरा हुआ है, क्योंकि सबको विक्टिम प्ले करना बड़ा अच्छा लगता है, तुम भी प्ले करो और Hmm. दूसरों को बताओ कि तुम वो कितने अत्याचारी थे. तो ये तो Yeah. है मतलब. And sometimes I'm having conversations with people in my institute, and despite the fact that मतलब they've come to such a college, and मतलब इतनी मेहनत करें और इतना पास होने के बाद अब whenever I'm having a conversation with them, like I was having a conversation with one of my friends on nofap. Okay, Hmm. so अभिषेक, मतलब ये तुम्हारा लास्ट पॉइंट, ठीक है? इसके बाद मुझे, लाइक, देयर आर 7 पीपल वेटिंग. हेलो. हेलो, कैन यू हियर मी? कॉन्वर्जेशन. हेलो, हाँ, मैं ज्यादा हेलो. खो गया था कॉन्वर्जेशन, ज्यादा हाँ, नहीं, कितना. मैं कह रहा था कि बहुत टाइम हो गया है, कई लोग वेट कर नहीं, रहे हैं. सही सो बात. इफ यू हैव वन मोर पॉइंट टू मेक इट, एंड देन आई विल मूव ऑन. No, I was talking to one of my friends on nofap, and I don't know what your view is on nofap, but I was telling him कि मतलब scientifically what are the chemicals being released in the brain, and that हुँ, is why it makes you feel, that there is no motivation, or you just want to sleep, or you want to relax, or whatever. हुँ, Maybe मतलब जो एक्चुअली जो केमिकल्स रिलीज हो रहे हैं, दे आर मतलब स्ट्रेस से हटाने के लिए वो बने हुए हैं आपके दिमाग में. ओके, द हुँ, dopamine is released, and the या, norepinephrine is released, and हुँ, because of the release of these chemicals, you feel like so relaxed. It's not because of weakness, really. या. It's not weakness at all, आई because एम we know लाइक, the. आई थिंक नोफैप इज़ नॉनसेंस. इट्स रीपैकेज्ड ब्रह्मचर्य. It's a like Yeah. this stigma built around sexuality or anything sexual, that is like, Hmm. हमारे यहाँ तो बहुत सालों से ब्रह्मचारी ये करे, नारी पाप का द्वार है, वगैरह वगैरह, Hmm. लस्ट बुरा है, मंक बन जाओ, पूरी जिंदगी सेक्स मत करो. ये उसी का मॉडर्न रूप है, एंड ये कभी जाएगा नहीं. लड़कों को जब तक लड़कियां रिजेक्ट करती रहेगी, लड़के बहाने ढूंढते रहेंगे ये प्रूव करने के लिए कि लड़कियां जरूरी है ही नहीं, और उसकी वजह से ये सब आता रहेगा. हाँ, तो वही मैं उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा था कि व्हाई पीपल आर सो इजी टू बीइंग मिसलेड इन अ मोमेंट लाइक नो फैप, क्योंकि उनकी उनकी रियलिटी में कुछ ना कुछ है जो बैठ रहा है, जो वो कह रहा है कि मतलब अगर सामने वाला कहता है कि वीकनेस पैदा हो रही है, बट हम्म. एक्चुअली जो हो रहा है वो है कि आपकी रिलैक्सेशन की मतलब जो केमिकल्स है वो या, रिलीज हो रहे हैं, इस वजह से आपको या, नींद फील हो रही है. तो मतलब आप ये सोचो कहाँ कि लिखा हाँ, है कि यही तुमको 24 घंटे स्ट्रांग रहना है?
24 घंटे स्ट्रांग रहना एक अच्छी बात है, ये कहाँ लिखा हुआ है? हाँ, वही और वही उनका जो मतलब। डेफिने मतलब आई एम ट्राइंग टू कैटर टू देयर डेफिनेशन ऑफ स्ट्रांग। या या ज़्यादा और समझ एंड गया दिस इज़ चलो। इन अ वे आल्सो सम काइंड ऑफ दिस इज़ आल्सो सम काइंड ऑफ कैपिटलिस्ट thing कि if you are weak and sleepy at any point of time in the day, you should या not sleep because sleep is bad, you should be up and working. So मुझे लगता है कि नोफैप का कैपिटलिज्म के साथ जो लिंक है उसको एक्सप्लोर करना थोड़ा और ज़रूरी है। मैंने किया नहीं है वैसे। बट थैंक वही यू 4 अभिषेक, आवर आई स्लीप हैव टू कल्चर वही है। या या बहुत आई हैव टाइम टू हो मूव गया। ऑन नाउ। या थैंक्स चलो। मैन, थैंक्स अ लॉट एंड आल्सो अगेन थैंक थैंक्स फॉर बिकमिंग अ मेंबर। हाँ, करते हैं बात। बाय बाय। That was Abhishek. Let me see if there are any member comments. Samad says biryani is better than dalia, or was that biryani leads to dalia? Um, Samad says how to put a timer on StreamYard. Right. So the next person is Karan Singh. Hi, Karan. Karan Singh, you're on mute. आप म्यूट पर हैं. Please unmute yourself. Okay, I think Karan Singh has gone to the loo or something. We'll come back to him. Hi, Abhinav. आप म्यूट पर हैं. हाँ सर, वो हनुमान जी का फुटप्रिंट के बारे में आपका क्या कहना है? यार अभिनव, मुझे तुम बहुत पसंद हो क्योंकि तुम कभी भी मतलब आते ही भूमिका वगैरह बांध के ग्रीटिंग करने की कोशिश नहीं करते, सीधे पॉइंट पे पहुंच जाते हो। सीधे जिस चीज़ पे बात करनी होती है सीधे पहुंच जाते हो। हनुमान जी का फुटप्रिंट जो कहीं तो है, बट देयर इज कहाँ, नो रीजन। श्रीलंका में? हाँ, देयर इज नो रीजन टू थिंक इट वाज नॉट मेड, राइट? अगर मैं एक मंदिर बनाऊंगा और मैं वहाँ एक बड़ा सा फुटप्रिंट बना दूंगा, कौन साबित करेगा कि वहाँ पे कोई नहीं था? नहीं सर, वो कहीं पे भी है, वो क्या कहीं पे भी मतलब रैंडम है। हाँ, मैं कहता हूँ कि देयर इज़ नो रीज़न टू थिंक दैट दैट इज़ एन एक्चुअल फुटप्रिंट। इट्स एन आर्कियोलॉजिकल थिंग। समवन किसी ने मंदिर बनाया और किसी ने इस बात के मतलब जो रामायण का जो नैरेटिव है उसको सिंबलाइज़ करने के लिए वहाँ पे एक फुट बनाया। सो दैट्स व्हाई इट्स देयर। अरे! In addition to not being much for hellos, he's also not much for goodbyes. Let's try Karan Singh again. Hi, Karan. Oh, again, you mean you tried me first time also? Yes, yes, आप म्यूट से बाहर नहीं आए थे। वर यू अवे फ्रॉम योर कंप्यूटर? Yeah, actually, Abhishek or someone was taking too much time, so I just अच्छा. went out to take my dinner. That's okay. Are you busy now? Do you want to come back later? No, it's totally fine. It's actually Cool. my first time. I just discovered you through I don't know his name. His Science is Dope channel. Pranav, Yeah, I follow him since few months, and you did some collab with I I did a think collab why. with him. Yes, yes. So Yeah, welcome and to the I channel. Hi, what's Yeah, up? yeah, yeah. Thank you. You are just amazing. Just binge watching your content since few days, Thank you. and it's very good to see people like it is like you putting your thoughts so well. Hmm. Thank I you. did. What's up? Last time you were discussing with Pranav about that he should also write some book. You remember? Haan. Yeah. So you are writing something? No, no, I'm not writing. I was saying that he should write something. Okay, you suggested him, so I thought you are also writing I have a something. bunch of ideas. Like I have a blog and I can probably put those things together and make it into a book or something, but I haven't thought of doing it. Maybe I will, maybe I won't. I don't know. I was telling him that he should write a book. Can you suggest some good books? Like, what are your thoughts on? I'm yet to read a book by Yuval Noah Harari. It is Hmm. *Sapiens*. Have you read that? Sapiens. Yes. It is like, is it related to some atheism or kind of rationality? No, I talk about it often because it was the book that turned me into an atheist. Because मैं atheist बनने के 99% रास्ते तक आ चुका था, and that Yeah. 1% gap Sapiens filled for me. But Sapiens को लेके कुछ criticisms भी हैं that it does not present the full picture and that it is at the end of the day a popular book, so it's not going to be an academically sound book in every respect. But it's Hmm. a good book. I think you should read it. Okay. Can you suggest some more good books about Off rationality and off to the top of understand? my
सो हियर्स द थिंग, मैंने एक पेज बनाया अमेजोन पे, amazon.in/shop/vimo, Okay. amazon.in/shop /vimoh। अगर वहाँ पे जाओगे तो एक बहुत, मैंने बहुत अच्छा खासा कलेक्शन बना रखा है, बुक्स का लिस्ट है। वहाँ से कोई भी बुक चूज़ कर सकते हो, और वहाँ पे बुक्स को अलग-अलग कैटेगरीज़ में भी डाला है। वहाँ पे एक कैटेगरी है एथिज़्म के ऊपर, तो उसके ऊपर क्लिक Okay. करके बुक्स ढूँढ सकते हो। Okay. And like, what are your thoughts about? Like, for example, I'm seeing. I don't know about West, but I'm seeing this pattern in India हुँ, that people, a lot of people say that people are becoming more religious and religious than before. हुँ। I kind of slightly disagree because I think people are not becoming more religious, they are just becoming more religiously insecure. It's the same thing, I think. Being religious means being insecure, in my opinion at least. Other people could be have different views, Yeah, but yeah, I yeah. think I agree with the first part of your sentence. I don't think religion is spreading, Mhm. but I do think that religion is under pressure, and therefore the people who are religious Mhm. have to, make more of a show, make more गोरिल्ले की तरह छाती पीट कर, हाँ मेरा religion कभी नहीं मरेगा. It Yeah, happens when think someone is cornered. So that is what's happening with respect to religion. But also another thing that is happening is that secular thought, scientific and rational thinking is spreading a lot. And true. many people are coming to the realization that the benefits of science and rationality are clear to see. But the problems with religion are also clear to see. सो उस वजह से हमको बहुत लाउड लोग मिल रहे हैं इस समय। कई लोग ऐसे जो कि रिलीजियस हैं, पर अपने रिलीजन को अपने घर पे रख नहीं पा रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं, सबको दिखा रहे हैं, पब्लिक में फ्लॉन्ट कर रहे हैं, पॉलिटिक्स में घुसेड़ रहे हैं। Yeah, आई थिंक दैट इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग। इसका 2 रिज़ल्ट होगा, 2 ऑप्शन है। एक, रिलीजन खत्म हो जाएगा, जो कि मुझे नहीं लगता कि होगा। that दूसरा is ऑप्शन ये है far. कि रिलीजन रिलीजन विल चेंज सिग्निफिकेंटली। अभी जो चल रहा है ना, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, हिंदुइज़्म, सब कोई अपने आप को साइंटिफिक साबित करने में लगे हुए हैं, Yeah. राइट? सो मुझे लगता है इस वजह से रिलीजन में फंडामेंटल चेंजेस आएँगे ओवर द नेक्स्ट सेंचुरी। एंड मतलब हम तो नहीं होंगे देखने के लिए, पर उम्मीद करता हूँ कि हमारे बच्चों के बच्चे एक ऐसी दुनिया में रहेंगे जहाँ पे रिलीजन अ, अपने डॉगमैटिक व्यूज़ को पीछे छोड़ पाएगा और सिर्फ़ एक कम्युनिटी बिल्डिंग टूल के रूप में इस्तेमाल होगा। Okay, so what you're saying, it will transform into something else. Yeah, like it always transforms. Religion never remains the same. It changes over decades, over centuries. But Right. I think एक बहुत बड़ा significant change आ सकता है आने वाले 100 सालों में। Okay. So when I was saying that religion is on decline, I actually meant that people are not very. I don't see people doing. So I'm from the Hindu family. So हुँ, I don't see people doing a lot of puja or meditation or any kind of those stuffs that my dadi or anyone used to हुँ, do. But हुँ। people will always post things like wearing a big tika with a big flag with a flashy song. Yeah, You know what yeah, I mean? yeah, yeah. So in that sense, I was saying that people are not being religious; they are being religiously insecure. They will Yeah, always, they're being showy. Yeah, yeah, showy. Yeah, that's the exact thing I was saying. yeah. So is there another point you want to make? No, actually, I was not prepared. This is my first joining stream on this website, कोई so I बात नहीं, was कोई just बात new. नहीं. Come back anytime. That's okay. Okay, okay. You may continue, and thanks for taking me. Thank you, Karan. Thank you. Thank you for joining. Bye bye. Before I proceed, I'd like to thank Vikram Jaulia for the 40 rupee super chat. Thank you, Vikram. Much appreciated. And I also want to thank member Samarth for a $10 super chat. Thank you, Samarth. Much appreciated. I'll just remind everyone that if you want to become a member of the channel, you can click the join button below. And if you want a super chat, you can simply send a super chat like Vikram and Samarth just did. Every contribution you make helps me buy books and software and pay my bills. I'm a full-time content creator. This live stream, this podcast, my YouTube shorts on the other channel, my writings, etc. It all happens because I'm sponsored by people like you. So thanks in advance, and thanks to the people who supported just now. Next, I move to Yash. Hi, Yash. नमस्ते विमो। Namaste. पिछली बार मेरा क्वेश्चन रह गया था, सॉरी, वो गरबा वगैरह हो रहा था ना, तो क्या कहते हैं, वॉइस वो सब हो रहा था, अच्छा, तो अच्छा, उसके लिए अच्छा. हाँ, हाँ, मतलब हाँ.
तो पहले तो आपकी स्ट्रीम थोड़ी खराब हो गई, उसके लिए सॉरी। तो कोई बात नहीं, चलता है, बोलो। हाँ, बस मेरा सिंपल क्वेश्चन ये था कि जैसे आई एम अ अपर कास्ट पर्सन, ओके, हम्म। पर मैं जब क्या कहते हैं, मैं कास्टिस्ट नहीं हूँ, ठीक है, मतलब ये ओके। मैं ऐसे डिक्लेयर नहीं कर रहा, हम्म। ये मैंने टेस्ट करके देख लिया कि शायद मैं, मेरे में कुछ है, बॉर्न इन बॉर्न है कि मैं इवन इन जैसे क्लास में होता था ना, कुछ सर वगैरह कभी आते थे, हम्म। तो वो कास्ट थे, बोलते थे जनरल वाले ये, हाँ हाँ, वो वाला जो क्लासिकल कमेंट है ना, तो मैं उनसे भी काइंड ऑफ क्लास में डिसएग्री कर देता था। आई हम्म। हैव सीन दिस ओवर द इयर्स। तो ओके। पर ना एक एक चीज है कि मतलब जैसे मेरे दूसरे दोस्त हैं, वो पूछते कि हम ब्राह्मण हैं या फिर हम अपर कास्ट हैं, पर हम्म। हम इस चीज में मतलब क्योंकि हम आइडेंटिफाई करते हैं हाँ कास्ट सिस्टम वगैरह कुछ है, तो हमारा रोल क्या है, क्योंकि जब हम दलित मूवमेंट्स में ज्वाइन करने की कोशिश करते हैं तो वो बोलते हैं नहीं तुम तो दलित हो नहीं, हमारी अंडरस्टैंडिंग नहीं है तुम्हें मूवमेंट की, जो कि फेयरली सही पॉइंट है, ठीक है, ये मैं हम्म। रिकॉग्नाइज करता हूँ। हम्म। फिर हम कमेंट भी नहीं कर सकते, हम लिख भी नहीं सकते उसके बारे में, क्योंकि हमारा कुछ एक्सपीरियंस नहीं है उस चीज पे। तो अब या हम मतलब हम क्या करें, मतलब लाइक मैं ऐसे नहीं कह रहा, मतलब कोई तुमको नहीं, डिलेमा समझ नहीं गया, है मैं समझ गया, समझ गया। तुम जब किसी के पास जाते हो और तुमको कहता है कि तुमको एक्सपीरियंस नहीं है, तुम उनसे पूछ सकते हो कि मैं एक्सपीरियंस कैसे गैदर कर सकता हूँ, और अगर उन्होंने तुम्हें बुक्स रिकमेंड किए या किसी एक्टिविटी में एंगेज करने को कहा, तो तुम वो एक्टिविटीज़ में एंगेज कर सकते हो और अपने आप को उस लायक बना सकते हो। कई बार ये होता है कि कई सवर्ण लोग अगर जाति को रिजेक्ट करते भी हैं, तो भी वो जाति की वजह से जो प्रिविलेज आती है उसको रिजेक्ट नहीं कर पाते। अगर तुम बाहर जाओगे और तुम और तुम्हारा एक दलित दोस्त दोनों मकान लेने जा रहे हो, राइट? तुम्हें तुम्हारा जो दलित दोस्त है उसको, यश मैं तुमको थोड़ी देर के लिए म्यूट कर रहा हूँ, ठीक है? कोई नहीं, कोई नहीं। ये बैकग्राउंड साउंड्स की वजह से थोड़ा इंटरप्ट हो रहा हूँ। तुम एक दलित दोस्त के साथ मकान ढूंढने जाते हो, तुम्हारे दलित दोस्त को मकान नहीं मिलता पर तुम्हें मिल जाता है, बावजूद इसके कि तुम कास्टिस्ट नहीं हो, है ना? तुम अपने दलित दोस्त के साथ डिस्क्रिमिनेट नहीं करते, तुम अपने दलित दोस्त के साथ रहने में कोई गलती महसूस नहीं करते, पर तुम्हें मकान मिल जाएगा, और तुम्हें मकान चाहिए, इसलिए तुम मना नहीं कर पाओगे। So the lack of understanding is not necessarily, it's not always about you being a bad person or a good person. It's often also about you not being able to give up your privilege. क्योंकि उनका जो लाइफ का लिव्ड एक्सपीरियंस है वो तुमने नहीं एक्सपीरियंस किया और ना ही कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारा सेकंड नेम, तुम्हारा नाम, तुम्हारा धर्म तुमको वो करने नहीं देगा। So maybe that is what they are talking about. So I would recommend, if you really want to engage in anti-caste activities and educate yourself about Brahmanism, read books by Ambedkar, talk to your Dalit friends, ask them how you can be of help, let them tell you how to do it. क्योंकि कई बार हम लोग एक गलती और करते हैं, वो ये होता है कि हम सोचते हैं कि हमें पता है उनके साथ क्या, उनको क्या प्रॉब्लम है, हम सॉल्व करेंगे, और बहुत सारे केसेस में हमें पता नहीं होता है। इसीलिए बेस्ट आइडिया होता है उनसे पूछना कि तुम बताओ मैं क्या कर सकता हूँ, और अगर वो ना बताना चाहें तो बैक ऑफ, फाइंड समवन हु विल टॉक टू यू, एंड इफ दे टेल यू व्हाट टू डू देन मे बी यू कैन ट्राई डूइंग दैट। इज दैट, डज दैट आंसर योर क्वेश्चन? यप, इन काइंड ऑफ सेंस, क्योंकि आपने जो ये वाला फ्लैट वाला बात बोली ना, ये हो चुका है। मेरा एक दोस्त ओके। है, ठीक हाँ। है, उसके साथ हुआ ये सेम केस, तो उसने बोला देख, तेरे पास एक प्रिविलेज तो है ना कि तू इसी शहर में रह सकता है, ठीक है, हम्म। अपने मम्मी पापा के साथ रह सकता है, मैं तो मम्मी पापा के हाँ। साथ भी नहीं रह सकता, है हम्म। ना, क्योंकि उनके पास इतना हम्म। कैपिटल नहीं है कि वो वहां पर आके पूरा शिफ्ट करें और जॉब ले या फिर कुछ भी। या देन आई रियलाइज, ओ या दिस इज, है ना। और पता है ये मतलब लोगों को लगता है ऐसा नहीं होता, पर होता है, इवन मैं ये कह रहा हूँ मेट्रो सिटीज के लिए, हम्म। पुणे, गुजरात, इन सब बिल्कुल, जगहों पे मेट्रोज़ भी में होता बहुत है। होता है। मेट्रोज़ का कास्टिज़्म एक अलग फ्लेवर का होता है, क्योंकि वहाँ कोई अपने आप को कास्टिस्ट बोलना नहीं चाहता, इसलिए वो कास्टिज़्म करते हैं, पर दूसरी चीज़ों के हम्म, पीछे छुप कर करते हैं। प्रोफ़ेशनल क्वालिफ़िकेशन या के पीछे छुपते हैं, मेरिट के पीछे छुपते हैं, और ईटिंग हैबिट्स के पीछे छुपते हैं। इट्स ऑल कास्ट। यप यप। और दूसरा ये है ना कि एक चीज और है कि आपको लगता है कि इंडिया में जो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स है, जो कि बहुत ज्यादा है और हुँ, बहुत हुँ, पहले से क्या ऐसा आपको लगता है कि लेफ्ट में ये शुरू हुई थी, जैसे हुँ, दलित मूवमेंट्स के द्वारा, हाँ वो जेन्युइन थी जो पहले पहले की थी। अब हुँ, मुझे कोई कोर में नहीं लिखता कि कोई फिलॉसफी हो कि मतलब, या फिर कोई
स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल मूवमेंट हो दलित्स के द्वारा या फिर इवन कोई और भी, क्योंकि ना और ये चीज ना, और फिर ये ट्विस्ट हो गई थोड़ी, और हिंदूज जो थे इस साइड के, मतलब हिंदुत्व वाले साइड पे जो ट्रैड्स हम्म टाइप थे, उन्हें हम्म बोला यार अब तुम्हारी आइडेंटिटी सही है तो फिर मैं भी अपनी आइडेंटिटी लाना चाहता हूँ, जो कि अब हो रहा है। हाँ। तो आपको सो लगता है मैं ट्रांसफर? असल में, सॉरी टू इंटरप्ट यू, पर मैं तुमको म्यूट करके इसका जवाब दूं। यस यस ऑफ कोर्स। So, identity politics is not always a bad thing. It depends on which identity is being asserted. Suppose feminism is an identity. A woman wants to identify as sorry, feminism may not be right example. Maybe transgender identity. A person wants to identify as their trans identity, and they are unable to do so because they will face persecution if they do so. So, is us case mein identity politics is fine. But if a member of a privileged caste or class, if a member from a category which is traditionally very powerful in society decides to hammer down on their identity, then that is not helpful identity politics. मैं जिस आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के मतलब आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के बारे में जब सोचना होता है ना, तो मैं उसके बारे में पावर स्ट्रक्चर्स का इस्तेमाल करके ही सोचता हूँ, एंड आई थिंक दैट क्लैरिफाइज अ लॉट ऑफ थिंग्स. Secondly, I don't think the Dalit movement has died down. Yes, it was diluted when the right wing started targeting OBCs, etc. As you know, बहुत सारा दलित वोट बैंक अपने अंदर ले लिया. But I think there is a resurgence happening right now, and I think in the coming years it will show its results both politically and culturally. So I don't think it's dead. I think there was a concerted attempt made to kill it, but I don't think it is dead. सर मैं थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा इस चीज से, क्योंकि ना आई थिंक हाँ ब्राह्मण्स ने ये कास्ट सिस्टम स्टार्ट करा, ठीक है, Hmm. बट आई गेस कि ना बहुत सारे ब्राह्मण्स नहीं है कास्टिस्ट, लाइक मैं ये नहीं क्लेम नहीं कर रहा कुछ, पर शायद क्योंकि मैं अपने पास देखता हूँ कुछ ब्राह्मण जब चेंज भी हो रहे हैं ओवर द टाइम, Hmm. ठीक है, और Hmm. दूसरा ये है कि ना बहुत ज्यादा डेटा ये भी दिखाता है कि ओबीसीज आर द मेन वो कि जो मतलब दलित को काइंड ऑफ मारते हैं ज्यादा, ठीक है, नहीं मैं ये नहीं, नहीं कह रहा I कि see. I'll tell you what. Giving a clean chit to Brahmins is not a helpful idea, because at the end of the day, what you're doing, मैं ओबीसीज के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ. मैं कह रहा हूँ कि जब तुम ओके जिस कैटेगरी ने कास्ट सिस्टम को शुरू किया और परपेचुएट किया और आज भी कर रही है, उस कैटेगरी को क्लीन चिट देके ओबीसीज के ऊपर इसका ढीकरा फोड़ना, मुझे लगता है कि इट्स स्टिल सम काइंड ऑफ कास्टिस्ट बिहेवियर. सो आई थिंक यू शुड अवॉइड डूइंग दैट. सर मैं ये नहीं कह रहा, मतलब मैं ये बस ये कह रहा हूँ कि शायद क्योंकि अब डायनेमिक्स चेंज हो रहे हैं थोड़े, मतलब हमारे इंडियन पॉलिटिक्स के, नहीं और हुए हैं. इट्स स्टिल, मैं मैं वही बोल रहा हूँ ना, जब जब ओबीसीज को हाँ हाईजैक करके राइट विंग ने अपने अंदर असिमुलेट कर लिया, what the kind हम्म of behavior you're talking about is still Brahmanism. It was perpetuated by Brahmin, the people who created ओके the caste ओके system. आई गेट इट, ओके आई गेट इट, The थैंक यू people आई में गेट भी इट, तुमने ये देखा है ना, Django Unchained पिक्चर देखी है? या यस उसमें देख, उसमें इसका सैमुअल एल जैक्सन का कैरेक्टर याद है? यस वो, हाँ याद है मुझे, He was a black slave who was in charge हाँ of managing other slaves, right? यस So यस he यस was यस यस what he was doing was still the white man's job. He was a black slave who was doing the white man's job. That does not take that. उसको देख के तुम ये नहीं बोल सकते कि white men तो बदल चुके हैं, black लोग ही कर रहे हैं ये सब, है ना? ओके ओके ओके, तो Yeah. ये हाँ मतलब मैं समझ गया आपके आपकी मतलब आपका एपिस्टेमोलॉजिकल आर्गुमेंट क्या है कि हमें शायद एपिस्टेमोलॉजी को माफ नहीं करना चाहिए जिसने इतना बड़ा कांड करा नहीं, मैं है, कहता हूँ आई कि गेस। सिस्टम के ऊपर ध्यान दो. कौन एनफोर्स कर रहा है उसके ऊपर ध्यान देना सेकेंडरी होता है. द सिस्टम हैज टू बी रिप्लेस्ड, एंड इन ऑर्डर टू रिप्लेस द सिस्टम यू हैव टू नो वेयर द सिस्टम केम फ्रॉम एंड हु इट एक्चुअली एनेबल्स एंड सर्व्स. ऐसे बहुत से लोग हैं अपर कास्ट में, ब्राह्मण्स में, जो कहेंगे मैं बिल्कुल कास्ट विरोधी हूँ, पर वो अपने कास्ट प्रिविलेज को छोड़ेंगे नहीं. वो लिबरल बनने का नहीं ढोंग छोड़, करेंगे और एक ऐसा सिचुएशन बनाएंगे जहां ब्लेम उनके ऊपर ना जा पाए और जाएगा सिर्फ उन लोगों के ऊपर जो कि हिस्टोरिकली ऑप्रेस्ड रहे हैं. यप जैसे कि एक आर्गुमेंट है कि एरियन आर्यन माइग्रेशन नहीं हुआ, मतलब या सबसे पहले तो यही कास्ट या प्रिविलेज ही है एक तरीके से कि हम तो या इंडियंस है। अरे भाई अगर मतलब हमें ये नहीं पता सब ना कि अपने आप को डिस्कोर्स ओरिजिनल क्या है।
सब अपने आप को ओरिजिनल नेटिव साबित करने में लगे हुए हैं, कि जबकि असल में ये सच ये है कि ओरिजिनल नेटिव्स हम नहीं थे, ओरिजिनल नेटिव्स यहाँ के हुँ। आदिवासी थे। नहीं सर, आप एक बात देखो ना, इसमें कॉन्ट्रडिक्शन कैसी है कि उनके हिसाब से कास्ट सिस्टम कैसे बना, पहले डिस्कोर्स आया और दलित वगैरह जो भी लोग थे उन लोगों ने मान लिया, अरे सबसे बेस्ट चीज तो यही है, तुम लोगों या ने कास्ट सिस्टम लाया, ब्राह्मणिज्म, ये है ना। अरे भाई तुम्हारे कुछ डिफरेंस था उनमें, ठीक है, तभी उन्होंने डिफरेंस आइडेंटिफाई करा और तुम्हें क्लास सिस्टम में बांटा, जो हुँ। कि जो, और और ये तुम हर इस जगह बात पे हुआ भी है। ध्यान दो ना, इस बात पे भी ध्यान दो, ये जो एजुकेशन है कि अ, हम नेटिव हैं, तुम हम में से एक हो, ये एजुकेशन बनाया किसने? ये ब्राह्मणों ने बनाया। और ये एजुकेशन बाकियों पे थोपा गया, जबकि उन लोगों के खुद के एजुकेशन सिस्टम्स थे। द ट्राइबल कल्चर्स व्हिच हैव बीन सब्स्यूम्ड बाय ब्राह्मणिज़्म, जिनको आज भी राइट विंग साबित करने की कोशिश करता है कि ये लोग तो हिंदू ही हैं। अबे उनमें से कई लोग अपने आप को हिंदू नहीं मानते, तो ज़बरदस्ती हिंदू बनाने पे तुले हो, राइट? अरे सर, पूरी सिविलाइजेशन थी, आईवीसी, इंडस वैली सिविलाइजेशन, पूरी सिविलाइजेशन यहाँ पर खड़ी थी, हाँ, जो और वो उसका उनकी उसका पूरी, हिंदू धर्म के साथ कोई लिंक नहीं था, बाय द वे, आज हाँ, तक पता नहीं चला। वो लोग किस कुछ लोग भाषा बोल में बात रहे करते थे, उसका हैं, संस्कृत से दूर-दूर तक का रिश्ता नहीं है। नहीं, कुछ कुछ लाइव स्ट्रीम करते हैं ना लोग, तो वो बोलते अरे ये देखो ये रहा शिवलिंग। मैं बोला अरे यार तुम क्या स्यूडो आर्कियोलॉजी कर रहे हो यार, तुम मतलब हाँ, बैठे बैठे। शिवलिंग इतना सिंपल शेप है ना, उसको कहीं भी ढूँढना आसान होता है। ये फिर तो वो जो हुँ, स्टैच्यू है फेमस आईवीसी में, हुँ, जो दाढ़ी वाला आदमी है, वो तो फिर मुझे हुँ। मोदी जी जैसा भी लगता है, तो मतलब क्या 3-4 हज़ार साल पहले मोदी जी थे बिल्कुल ये थे, बड़ा बिल्कुल सवाल थे। मोदी जी इटर्नल हैं, वो हमेशा से थे, हमेशा रहेंगे। चलो यश, आई विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट है। पर्सन इफ इट्स ऑलराइट विद यू। चलो, बाय-बाय। दैट वाज़ यश। लेट मी रीड अ फ्यू कमेंट्स। Hmm. Abhishek says, I'm sorry to everyone for talking so long. I thought I was perceiving time differently. Idealism. It is real. Samad says, this one though was for biryani. I don't know what that was about. Uh, Abhishek says, happy Vimohara to all atheists. Vimohara क्या होता है? Apur says, Vimo, your live streams are like आस्था चैनल. Please, ऐसे भयंकर इंसल्ट मत करो. Right. Let me take on. Okay, Billy Butcher says, Happy Dhammachakka Parivartana Din. To you also, to whoever is celebrating. To whoever is celebrating whatever festival, if it makes you happy and you're not being a dick to anyone, please enjoy yourself and give my best wishes to your family. Next is Rajat. Hi, Rajat. Hello, hello. What's up? Yeah, I found out your channel recently. Actually, it's my first live stream I joined. So Thank I you. heard you're Welcome. from, yeah, I heard you're from Odisha. Yes. So am I. I want to know your opinion about Odisha politics. I mean, it has been the same government for last, I don't know, 22 years or so, 20, and more than 20 years. Yeah. yeah. So yeah, it fascinates me the politics in Odisha, but I don't know. It doesn't go anywhere. I mean, Yeah, it's a static state. The static yeah, state theory of the universe. But I think, listen, if you're like, you have a thing, and one of the downsides of it is that things have become static and nothing changes. yeah, But that may also be one of the good things about it, because if change means getting the kind of change that India got in yeah, 2014, then I'm happy without exactly. it. Yeah, right? Yeah, before Yeah. 2014, it felt like yeah, the things are not happening anything there, but now it Yeah, yeah, feels yeah, like yeah, yeah. fine. I mean, it's In better not. 2014, it was like, yeah, change, man, change. And now you're like, Yeah, अबे क्या drugs खा के मैं yeah. change मांग रहा था, ये क्या हो गया? Although till 2008, BJP was an ally there, but yeah, they. I don't. No, no, BJP has been allied with the BJD before also. I think 2008 में क्या हुआ था, वो जो The Lakshmananand Saraswati case happened. I yes, guess. yes, that case happened, and then BJD parted ways with the BJP. Yeah, Naveen Patnaik has always been very clear about some things in life. yeah, I keep telling people this analogy. Mamata Banerjee is the Hulk. She yeah, finds an enemy, she will go after him, she'll beat the crap out of it. Naveen Patnaik is Bruce Lee. He's like, be water, my friend. Enemy वहां से आ रहा है, we'll go here. Enemy यहाँ से आ रहा है, we'll go there. So he avoids things, and that is how he maintains his space. Yes, things are
uh, like Odisha is not problem free, obviously, No, but no, of I course. do not think Odisha under the kind of party that is at the center right now would be better. Yeah, but sometimes it feels like BJD is aligning most of the things they align with. They align with the central politics, Yeah, and that that BJD has always done. If the UPA yeah, was in power, they would be allied with yeah, the UPA. they do that Yeah, for everyone. it's the But past. It's the path of least resistance. yeah, Rajdeep Sardesai made a video about this a couple of days yeah, ago. I've India's heard. most powerful chief minister, Navin Patnaik, was number one. I've seen that. Yeah, Like nobody thinks of him as this, legendary, warrior, etc. He just sits in one place and he's been sitting in that one place for 20 years. he doesn't speak It's Odia for fine. 22 years, and Yeah. yeah, people talk about I identity think another politics. reason behind this is also that sorry to interrupt, but I'll let you Hmm. speak after this one. Another reason is that when Odia people go out to vote, Yeah, they choose not change but safety. And if a thing is there and if it's there for a long time, they think there must be a reason why my dad voted for this party, so they vote for the same party all over again. now there is partisans in BJD. Like couple of years back, I was in my village for the panchayat election, and there are two Hmm. candidates who has been stood by two different BJD people. One was Hmm. from like assembly, and there another is from nearby assembly seat, and Hmm. they were fighting among each other. So yeah, but I don't know what will happen after Navin Patnaik. But till now, it's I think this what will happen, like uh, when Indira Gandhi passed away. yeah, For 10 years after Indira Gandhi went away, and maybe even today, in some places, there might be people who don't know that Indira Gandhi is not alive. So they keep yeah, voting for the party on the basis of the love for that one leader. So I think that might happen with the BJD also. The BJD might be in power for a long time based on the love and respect that people have for Navin Patnaik right now. yeah, maybe. Yeah. Maybe, but one thing I was happy about in my assembly seat, a Congress leader won. Mohammad Mokim won in my. But Okay. yeah, he was, I think, the Hmm. one of the two, three Congress people who won, and this was considered to be one of the most BJD, yeah, Oh, okay. full Okay. seat for BJD for last, I don't Hmm. know, 12, 15, The 20 years. Odia people have had a bad experience with the BJP as well as the Congress. Yeah, So I don't see any of them coming even close to power for a long time. but now I feel like BJP is gaining some power at places like because That this comes and goes. It comes and goes. Like it rises, then it is no, the neutralized and stuff. RSS has a good hold over the people. I mean, it's kind of an I'll tell you undercurrent. something else. That actually won't do much to change the power equation in Odisha. When last time Odisha elections were going on, Rajdeep Yeah. Sardesai came and he went around Bhubaneswar asking Mm. people, so what do you think of Modi ji? Ah, great, Modi ji, great, Modi ji is perfect. Yeah. And then he'll say, so you'll vote for the BJP? And they'll say, no, no. So But it is, ironically, in Bhubaneswar, Odisha is a, BJP won. what? But Bhubaneswar said, I think BJP won. But at the Aparajita end of the Saxena was day, there. Yeah. at the end of the day, it did not change the party's fate, right? Like Yeah. the pattern is all over the place. The people are incredibly supportive or open to the possibility of BJP coming, but when they go Yeah. out to vote, they still vote BJD. Yeah. I mean, it's I think like this might be people. one of the reasons the BJD always remains comfortably close to the any party that is in power. Like Yeah. so that people don't see it as different from that party, because if that happens, then the party gets painted in a negative light, and then that might affect people's opinions, but they don't let that happen. So whoever is Yeah. powerful, they just yeah, we're okay with you. Yeah. Great, Rajat. Do you have anything else to add? No, no, no. Nice to Cool. talk to you. Yeah. Thanks, Cool. man. Thank you. Next is Agastya SR. Hi, Agastya. Hello, Vimal. Hello. Before I go on to ask my question, I gotta say, Sapiens is crap, man. What? Sapiens is crap, seriously. Sapiens is crap. Okay. No, Okay, ask your like question. you seem to be under the impression that it gets a lot of inaccuracies because I don't know he's dumbing down the concept. It's not like that at all. I Okay. mean, that guy
here's the thing. The understanding I got from reading *Sapiens* is that it's this. I don't know. It's totally focused on white audience, and he has written in a sense in which his white Western European audience can connect to their mythologies, and he blended that with his appeal to science. Like Okay. extremely inaccurate. If you want to know how wrong he is, read *Dawn of Everything* by David Graeber. Read what? *Dawn of Everything* by David Graeber. Dawn of He Everything. Okay, actually, I'll yeah, add it to my list. it's probably one of the best book written by Graeber and Menger. It's probably the best book written about history and anthropology in like in decades, I think, Okay, because like cool. in that he debunks every single misconception your traditional structuralists, anthropologists, archaeologists, all the Orientalists had on eh, many societies. Okay, cool. I'll add it to Okay, my so list. okay. So that being said, I had a question. You have a non-science background, right? Communications degree. Yes. I myself am pursuing science. So here's the thing. What do you think? Uh, how? What kind of role can a non-science communicator play when it comes to science communication and, in general, spreading rationality and whatnot? And vice versa can be said about scientists in spreading political consciousness in the scientific world. Because here's the thing: many of the transgender debate and the the bell curve thing for about the whole infamous Sam Harris episode, all that. I Hmm. mean, you see a lot of scientists don't realizing that, especially biologists, psychologists, anthropologists, and all that, they don't realize that their work is quite political in nature, be it Yeah. recognizing gender identities or like racial structures and whatnot. And same can be said about many anthropologists and like many of the science folks. They either seem to try to appeal to science and somehow make their thing more scientific. I mean, have you seen Yeah. House MD? Yeah. He, I mean, many of his arguments are like appeal to science. Okay, why did human beings start questioning themselves? Because those who didn't question much, they got whacked and all that. Very crude simplifications of what happened, House is forgetting a that TV human show. beings. So Like House is a I'm just giving you an example, man. Like yeah, what kind yeah. of House is a arguments are being TV put up. show, and I think Yeah, that if there is a foundation to it, it is not science. It is pessimism in general. The philosophy of yeah. pessimism. Yeah. I mean, I was giving an example for appeal to science. Okay. Yeah, because I mean, we see many of the evolutionary psychologists, evolutionary biologists completely forget this idea that human being is and was a political animal. Hmm. And many of the anthropologists trying to like appeal for science. Where do you think is going on? Do you have any take on it? You're asking essay type questions, man. I don't know where to start. Do you want to ask something specific? Like, what Like, is your take on this thing? Is quite a wide thing. Like, if you I mean, because if here's you the want to thing: frame it as a scientists. specific question, please Here's do. the thing: many scientists suck at spreading rationality. I mean, let's Hmm. face it. And Hmm. many of the non-science people either they try to appeal to science and get things horribly wrong. And Hmm. in this world, what do you think is the role of non-science people from backgrounds, literature, and history in spreading rationality? How do you think this goes? I guess they can lend their communication skills to the area, and what they need to do in order to do so is that they need to be able to understand what is being said. So it's kind Yeah, of sort of a vicious circle, although I would rather call it a virtuous circle, because if the non-science background person is communicating scientific ideas, the least that they can do is understand science a little bit. And in order to yeah, understand science a little bit, they have to rely on scientists who, as you said, are not very good at communicating popular science concepts. And yeah. the I ones mean, who do communicate popular science concepts have to necessarily oversimplify things, because the hardest form of the argument will be incomprehensible to most people. So it's not really a very simple equation to figure out. But yeah, that is because my here, view on it. look at what's happening in pop science circle right now. Mikio Hmm. Kaku has found a niche in people who are very spiritual and want to Oh, add yeah. quantum Yeah. consciousness and all that shit. Richard Dawkins has gone like complete bonkers and he's just rising in Satya gaya. hate. Satya gaya. Yeah,
I don't even want to talk about Sam Harris, man. That guy turned out to be, I don't know. He's defending bell curve and like scientific racism and He's all that. gone. Richard Dawkins हटिया गया है, Sam Harris racist बन गया है, और नील deGrasse Tyson is catering to the most Bro, science bros. Science yeah, bros. kind You of know those people, it's science, bro. yeah. I mean, He's in kind of like he's in a meme territory right now. yeah. Yeah. I mean, it's quite pathetic, isn't it? I mean, how are you No, gonna? I don't think. See, my way of looking at these things is always that Yeah, there is a situation, there is a certain thing that needs to happen. How effectively can it happen? Is it possible for that thing to happen with 10 out of 10 efficiency? Or is it the case mm, that it can only ever happen at 8? It's not possible to go from 8 to 10. Pranav Radhakrishnan of Science is Dope made a video a couple of days ago saying the moon doesn't go around the earth. And he's right, the yeah, moon doesn't go around the earth. But those who talk about science have to necessarily put it in the simplest possible terms, because yeah, widespread awareness of some of the slightly deeper concepts is absent. So yeah. I would say that Neil deGrasse Tyson is in meme territory, but that's probably because he But has to be. it's If he was but not it's in it's meme okay. territory, he would not be effective. I mean, as long as you're not like spreading incorrect information, Yeah, you're yeah, okay, I guess. Because yeah. here's the thing. I mean, people like Cox and Lawrence Cross, in order to dilute, they tend to get things wrong. I mean, you don't Hmm. dilute to the point that things get wrong, Yeah, right? yeah. Yeah, I mean, even today, I mean, especially when it comes to the political sphere of I science, think like uska the whole, like I'm glad you brought up the political part. Uska ek aur aspect ye hai कि the scientist will be humble and undecided, and this is not the whole picture, there is more to it, etc. And then the spiritual guru will come and say, I know 100% sure that the universe is not real. And the yeah, layperson because who this, is faced with two options, "Hey, he's yeah, not sure about this, but this guy is super confident. Let me go with this guy." So scientists have yeah. to kind of take on the appearance of someone who is sure about things, even though sometimes they're not. I mean, it's not just that. When it comes to field of biology, I mean, things get lot more political. Have you seen this recent interview of Neil Tyson by Ben Shapiro, that where he tackles transgenderism? No, I haven't. I actually avoid Ben Trans- Shapiro. उसकी शक्ल दिखते मैं वीडियो हाइड कर देता हूँ. yeah, I mean, I saw this one clip on this channel called Wash. I mean, I don't usually watch him, but it was recommended, so I liked it. There he Hmm. says, okay, people want to look into this thing with a scientific perspective. Okay, what causes this? What is this thing? Hmm. And he says it might be biological, it might be purely psychological. DeGrasse Hmm. Tyson says, Hmm. but that shouldn't matter. Even if it's Yeah. psychological, doesn't mean it's not real. But Yeah. these people who want to use science as a way to discriminate, like when they're looking for anything, the Hmm. same Ben Shapiro talks about Bible as if it's the fact, but Yeah. he wouldn't shy from using the same science to subjugate trans people. And say, See, okay, I find there to be no point to mentioning Ben Shapiro, because the man is actually quite visibly no, dishonest. no, no. I mean, I'm talking about the likes of Ben Shapiro, the ones who are sitting in Congress, Hmm. parliaments, and all that. Are you an Thankfully, American? Are you an American, by the way? no, no, I'm not. Okay. Thankfully, Indians don't have that kind of polarization when it comes to. I mean, there's a general there's a general Oh, we are getting there. Don't lack worry. of apathy, We're getting and there. We're getting there. yeah, but it's not quite politicized as It it's is. in. Like, did you the government of India has spent taxpayer money on departments that are supposed to worship, that are departments that are supposed to investigate the possibility of finding medicinal properties in cow dung. Well, There were I mean, actual press conferences by government appointed officials and ministers who are showing cow dung biscuits to the press and saying this will take care of radiation. We are there. uh, We are not very far no, no, no. off. I mean, no, no, no. But when it comes to bigotry against LGBTQ people, we're not there yet. We're not that polarized yet, because I don't know. Like, I mean, the government did fight against. There's a certain like distaste for this thing, and I know many people think it's a I'll tell you mental something. health issue. I'll tell But you something. When yeah, you have a political party in power which relies on social division in order to win yeah, elections, yeah, and they're using, violence against Muslims or violence against
Christians as Yeah. tools to win elections. They'll definitely come after At LGBTQ people. some But here's point, the thing. whenever it Yeah, becomes yeah. convenient, They'll definitely come after LGBTQ LGBT. people will become targets. Yeah, but Yeah. we're not yet to see the. I mean, it's not a campaign issue like it's in the West. Yeah, absolutely. Which is Yeah, why I found it really funny the Indian Supreme Court passing that decree on abortion. Abortion is a serious political issue over there. यहाँ पे yeah. यहाँ पे मतलब in order Yeah, to no, look don't cool care. and stuff, you making a judgment about abortion. Nobody gives a shit. Yeah, It will I it will mean, it will make some headlines in America. Look, Indian Supreme Court is so liberal, but it's not an election issue here. Abortion is yeah, an election issue in America. That's why yeah. the Like, conservative party has attached itself to it. yeah. I mean, here's the thing. I mean, what I was trying to get at is scientists tend to have this tendency to make themselves apolitical. Like, okay, oh, no, I don't want to take side. I want to be Yeah, objective. yeah, I don't yeah, want to. But that's not the case. Especially yeah, if you are above the level of molecules and you're looking at organisms, yeah, that's where your objectivity yeah, stops, right? yeah, yep. Especially in science like psychology and all that. I mean, what culture you belong to heavily influences your findings and whatnot. Yep. But That is true. at the same time, scientists are extremely shy when it comes to these political issues. Like, I mean, how do you think it's going to get? I mean, you're from a non-science background, right? I mean, how do you Hmm. see, how do you think these scientists can get more political awareness? First of all, we need to like one of the comments I get whenever I post anything on the atheism channel about politics, because atheism Yeah, also will be political because religion is political. A lot of yeah. comments that I get is, why are you becoming political? I thought this channel was about atheism. So there is the general understanding among people, false understanding among people, that it is possible to be an atheist and not be political, which is Yeah, not true, it's I totally think. impossible. Yeah. You know, I think everything you is know of political, this band including called. food is political. Have you heard Go of on. this band called Rage Against the Machine? Yes. Yeah, I mean, you see, many of the conservative fans are like, "Oh no, I mean, I used to love your music, then you became apolitical." Tom Morello was like, Yeah, "Okay, yeah. tell me which songs are Are you're political. I talking will about delete them." that? You're talking about Yeah, that. This guy, Captain Kirk, what's his name? William Shatner. yeah, He, the star of Star Trek, which yeah, was the most politically aware show back in the day, recently said, yeah. "When did Star Trek become political? बे बुड्ढे तू वहाँ पे था, तेरे सामने हुआ था ये सब." I mean, So I find it really weird that people get old and they start expecting things to be not political, because when they're young, they're kind of in tune with politics. But when they get I old, mean, they find new kinds of politics very discomforting. yeah, I mean, Star Trek was like way ahead of its time. It was talking about opioid crisis. It was Oh talking yeah, yeah, talking about yeah, transgenders, talking yeah, about immigration. You know that episode where there are like all kinds of refugees coming to the Federation and all that. It was yep, talking about, I don't know, sexism. You know that yeah, planet where all the women are like men are like the second class citizens. There are few yeah, men yeah, yeah, I mean, it was so ahead of his time. It was political when being political. I mean, even when you consider all the hippie trial and the anti-war protests, they were pretty ahead of their time. yeah. And now you Always, have, always. and Science now fiction you has have, always been political, always will be political, and people will be pissed at it. That and goes without now you saying. have people. Now you have people who are complaining about, oh no, Star Trek is forced diversity. What kind of forced diversity are we talking about? There was Lieutenant Uhura was there. Yeah, Uhura was a yeah, lieutenant. yeah. Ura was there. This guy was there. Sulu was Chosake, there. what is his name? Sulu. Yeah, Sulu was there, and there was this Russian character. What's his name? Chekhov. Chekhov was Russian. yeah. Cheka was Russian, Like he was American, but he but represented yeah, a Russian identity. Yeah, yeah. yeah, yeah. By the way, a Yeah. funny story about that is that that guy did not know how to do a Russian impression, so he just winged it, and then that came to be known as the Russian impression. So that's not actually how Russians spoke. Yeah, I mean, you in all the movies. I mean, you see like the accents done by the English actors. It's way more, I don't know, pronounced and Yeah, yeah, exaggerated. Because have yeah. you seen this series called Sense8 by Wachowski twins? Hmm. They Did you have like it? employed. Did you Yeah, like it?
Yeah. I found it quite like the first season was So, okay, okay. I guess the second season I lost the plot completely. and I Like loved nothing it except happened for during the the Indian entire plot. season. Oh, okay, okay. Just the Indian plot. I Yeah, mean, that was quite stereotypical, no? no, I don't know. I think Wachowski didn't quite get the scenario of political landscape in India. But Yeah, yeah. I talked to some people in the foreign. They're like, yeah, I mean, that's how nurses actually treat the patients with gunshot wounds. Okay, I have no I idea. mean, it was I don't even remember quite the realistic. scene where where a nurse is supposed to have treated a patient. You know that My kid who point, gets shot in the yeah, first scene. I saw it a long time ago, man. Like it must Okay, be fine. I mean, five, 6 years. either way, I loved it except for the Indian plot. Acha, okay. But that maybe, see, here's the thing. You did not like the Indian plot is because you did not like the Indian plot because you are aware what they got wrong because you know the Indian context. Maybe they got But everything wrong. no, no. I mean, And the I only asked the reason we others. like I it mean, is they're because like, they did not get to see it. no. I asked around, and it's pretty much everywhere else. It's quite on on the mark. Okay. So people liked it. Acha. So I guess we are special then. They only push the Indian part. Great, Agastya. I'll just have to move on, please, if that's okay with Okay, you. man. Do you have anything to add? I don't know. I mean, I when you start talking about Sunset, I kind of forgot. So it's okay. I will talk next time. Okay, cool, cool. Thank you. Bye bye. Right. I have two more people. One is agnostic Arjun Arya. Then there is PMM, and after that, I'll not take any other people. I'll just before I get to them, I'll just say thank you to Richie Sudarshan for the 100 rupees super sticker. Thank you, Richie. Much appreciated. Richie says, "Hey Vimo, I've only recently discovered your channel and have very quickly fallen in love with these streams. Thank you, Richie. Much appreciated. And once more, thank you for the contribution. It helps. If anyone else wants to support this podcast, you can do so by clicking the join button and becoming a member or simply sending a super chat. Abhishek says, it's so funny to watch Ben Shapiro. He's clearly uncomfortable when he starts talking about gender, but it's sad. Uh, Krishna says, what a coincidence. I just finished the ELI 10 podcast about atheism and come here to subscribe and see that you're live. Oh, wow. That is very cool. I love it when that happens. Like you go to someone's Twitch stream in order to follow them so that you get notified when they come live and you find out they are live. So, hi, Krishna. Welcome and uh, uh, welcome and kya? नहीं welcome ही और क्या बोल रहा हूँ. Abhishek says knowledge and awareness are equivocal, but the length of equivocality is different. Awareness is more influenced by intuition and knowledge more by rationality. Cool. Mm. Krishna says maybe it was God's plan. Just kidding. No offense to anyone. नहीं नहीं हम लोग इतना आसानी से ऑफेंड नहीं होते. आदत पड़ गई हमको. डिनर के बाद लाइव स्ट्रीम करने पे बर्फ होते हैं. हाय एग्नोस्टिक अर्जुन आर्य, क्या चल रहा है? हाँ बढ़िया चल रहा है. दशहरे के दिन आपने ले लिया लाइव. Thank you for waiting so long, man. I'm sorry for the delay. Go on. ओके. हाँ आज तो मतलब किसी सोशल पॉलिटिकल या हिस्टोरिकल इशू पर बात नहीं करनी है. बस एक अभी एक आपने आदि पुरुष का टीजर देखा था क्या? हाँ, मैं उसको इत्यादि पुरुष कहता हूँ. ट्रेलर मतलब मैं असल में पता है क्या है, मैं विजुअल इफेक्ट्स के इतना बड़ा एडिक्ट नहीं हूँ. मुझे नहीं चाहिए परफेक्ट विजुअल इफेक्ट्स. मैं बैड विजुअल इफेक्ट्स वाले पिक्चर्स देख सकता हूँ. मुझे बस ये प्रॉब्लम है कि रामायण को डिपिक्ट करने के आजकल के जितने भी ये हैं, साउथ से थोड़ा ज़्यादा सेंसिबल मैटर निकल रहा है. पर राम के ऊपर इतनी पिक्चरें बन चुकी हैं और वो इतने सारी पिक्चरें एक ही पॉलिटिकल नैरेटिव को पेल रही हैं ना, कि मैं रामायण के ऊपर पिक्चर देख के एक्साइट नहीं हो पाता. और लोगों को इससे प्रॉब्लम है विजुअल इफेक्ट्स से. मुझे विजुअल इफेक्ट्स में कुछ खास प्रॉब्लम नहीं लगा. ठीक है, थोड़ा बहुत पिच मतलब लो बजट लगता है, चलेगा, मैं काम चला लूँगा. मैं उस ज़माने का बच्चा हूँ जहाँ पे स्पेसशिप्स को धागे से लटका के ऐसे-ऐसे स्क्रीन पे उड़ाया जाता था. मैं उसको देख के भी खुश हो जाता था. मुझे फ़र्क नहीं पड़ता इतना. हाँ मतलब विजुअल्स तो इतने नहीं चाहिए, लेकिन एक्चुअली मतलब आप कोई ड्रेस वगैरह, जैसे अभी एक एग्जांपल है, जैसे स्टार प्लस पर एक आया था महाभारत. तो वो देखा था क्या आपने? स्टार प्लस का महाभारत? हाँ, देखा था मैंने. मुझे बहुत अच्छा नहीं लगा था. जिसमें सौरभ जैन जो आए थे कृष्ण बन के. हाँ, तो मुझे लगा था मतलब उसका, आप देखिए विजुअल्स तो उसमें भी बहुत खराब थे, इतने खराब विजुअल्स थे. लेकिन फिर भी कह रहे वो बहुत पसंद आया मुझे, क्योंकि उसमें ड्रेस और जो उनका जो लुक जो था वो बहुत अच्छा था.
मतलब जो उससे स्टार भी प्लस का ज्यादा महाभारत दिखने में बहुत अच्छा था। मुझे उससे वो प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि मुझे कभी भी किसी प्रोग्राम से उन चीज़ों को लेके प्रॉब्लम होती नहीं है, अपीयरेंस या फिर विजुअल इफेक्ट्स। मुझे प्रॉब्लम की थी कि जिस सीन में कृष्ण कुरुक्षेत्र में खड़े होकर अर्जुन से बात कर रहे हैं, ही वाज मिसप्रोनाउंसिंग द संस्कृत वर्सेस, हाँ जो कि असली महाभारत जिसने देखी है ना, बी आर चोपड़ा वाली, डॉक्टर राही मासूम रजा की लिखी हुई, उसमें द राइटिंग वाज एक्सक्विजिट। मतलब कोशिश करके उसको आज तक इम्प्रूव नहीं किया जा सकता, इतना बढ़िया था। और ये लोग कहते हैं कि हम महाभारत को नए सिरे से बनाएंगे, और बेसिक चीज़ों पे गलतियाँ हो रही थी उनसे। मुझे कपड़ों से इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है। मैंने तो अब पता है, अगर देयर इज़ अ प्ले, आई डोंट नो हू हैज़ रिटन इट, कोई अंग्रेज़ है जिसने महाभारत बनाई है, नाटकों का सीरीज़ है, पूरा का पूरा वीडियो इंटरनेट पे है हाँ भी। हाँ उसमें भीम पीटर इज़ प्लेड बाय एन अफ्रीकन एक्टर, अर्जुन इज़ प्लेड बाय समवन एल्स, एटसेट्रा, एटसेट्रा। वो भी मुझे बहुत अच्छी लगती है। उसमें तो मतलब महाभारत स्टाइल के कपड़े हैं नहीं, बट राइटिंग इज़ व्हाट मेक्स अ स्टोरी गुड। दैट इज़ व्हाट आई लाइक। डायलॉग्स और वो सब अच्छे होने चाहिए। हाँ। पर क्या होता है, मतलब मुझे तो वैसे कपड़ों से भी मुझे है, आपको नहीं होगा लेकिन मुझे तो है, मतलब मुझे हाँ हाँ, मुझे स्टार प्लस का जो ड्रेसिंग उन्होंने बहुत एक्यूरेट बनाने की कोशिश की थी, वो मुझे बहुत सही लगा था। और अच्छा। ऐसा मतलब अब जैसे आदि पुरुष में हम देखें तो उसको चमड़े का वो लगा दिया है, तो इस तरह की चीजें कर दी है, तो बिल्कुल एक वो देख नहीं पाता कोई मतलब किसी को मैं इंडिपेंडेंटली दिखाऊं कि ये कौन है, तो वो पहचान ही नहीं पाएगा कि ये हनुमान जी है। ये रहा ऐसा विशाल ने लिखा है, पीटर ब्रुक्स हैं उस महाभारत प्ले के डायरेक्टर। सो अगर हाँ सर्च करके किसको देखना है तो पीटर ब्रुक्स महाभारत सर्च करो यूट्यूब पे, अगर मिलता है फुल नाटक, देखो बहुत अच्छा है। हाँ। अच्छा, तो मैं ये पूछ रहा था कि मतलब ये बॉलीवुड क्यों नहीं दिखा पाता है? जैसे ब्रह्मास्त्र आई थी, वो भी मतलब फ्लॉप हो गई। हम्म। और तो मतलब कई सारे, वैसे मैंने सबके रिव्यू देखे, राइट विंग वालों के भी और लिबरल थोड़े विचार रखने वालों के भी मैंने हम्म। रिव्यू देखे, तो सबने नेगेटिव रिव्यू ही दिए, ब्रह्मास्त्र हो आदि पुरुष हो। मैं पता है तो राइट विंग के रिव्यूज को सीरियसली नहीं लेता, क्योंकि वो सब कुछ हाँ मोटिवेटेड होता है। बॉयकॉट बॉलीवुड जो लोग सुबह से रात तक जागते रहते हैं, उनके उनके लिखे हाँ रिव्यूज पढ़ के कोई फायदा नहीं है। तुमको पिक्चर के बारे में कुछ पता नहीं चलेगा। उनके रिव्यूज हम्म, सिर्फ उनके पॉलिटिकल व्यूज को प्रमोट करने के लिए लिखे होते हैं। रही बात हाँ ब्रह्मास्त्र के प्रॉब्लम्स की, मैंने ब्रह्मास्त्र को देखा नहीं है, पर उसके जो अच्छे वाले रिव्यू मैंने पढ़े हैं, मतलब विश्वास योग्य लोगों से जो रिव्यू पढ़े हैं, उससे हाँ, मुझे ये पता लगा कि उसके डायलॉग अच्छे नहीं थे, और उसके विजुअल इफेक्ट्स के स्टोरी ऊपर अच्छी बहुत नहीं। ज़्यादा फोकस था। हाँ, मतलब ये विजुअल्स पता है बहुत क्या होता अच्छे है? थे। जब मैं बच्चा था, मैं विंडोज़ 98 सीख रहा था, मैंने डेस्कटॉप पे क्लिक किया पावर पॉइंट। पावर पॉइंट में 50 तरह के विजुअल इफ़ेक्ट होते हैं। वो अक्षर यहाँ से उड़ के आएगा, ये घूम-घूम के आएगा, साउंड इफ़ेक्ट आएगा, टिन-टिनिंग और वूश-वूश के साउंड आएगा। ये सब करने में इतने बिज़ी हो जाते थे लोग कि पावर पॉइंट में अच्छी चीज़ें लिखते नहीं थे। कंटेंट अच्छा नहीं होता था, पर वो जो उड़ के आने वाले एनिमेशन थे, वो हर स्लाइड में होते थे। तो मुझे लगा इंडिया में विजुअल इफ़ेक्ट्स वाली फ़िल्मों के साथ ये अक्सर होता है। हाँ रिस्पॉन्सिबली अगर विजुअल इफेक्ट्स को इस्तेमाल किया जाए ना, स्टोरी को एनहांस करने के लिए, तो पिक्चर अच्छी हाँ बनती है। पर अगर तुमको लगे अरे हमारे पास इतना बड़ा बजट है, हम आग दिखाएँगे, पानी दिखाएँगे, स्टोरी गई तेल लेने, तो हाँ, अच्छी पिक्चर नहीं बनेगी। साउथ की स्टोरी फ़िल्में बेटर बहुत ज्यादा परफ़ॉर्म इसलिए करती प्रेडिक्टेबल हैं थी। क्योंकि लोग हाँ उससे इमोशनल कनेक्ट बना पाते हैं। अगर तुम्हारी स्टोरी के साथ कोई इमोशनल कनेक्ट नहीं बना पा रहा है, तो रियलिस्टिक तो लाखों होना करोड़ों चाहिए खर्च थोड़ी कर लो, पिक्चर अच्छी नहीं स्टोरी। बनेगी। हाँ, हाँ? सॉरी टू डिस्टर्ब, बट मतलब रियलिस्टिक होना चाहिए। रियलिज्म बहुत ज्यादा खत्म हो जाता है। अब जैसे ब्रह्मास्त्र का मैं थोड़ा सा बताऊं तो उसमें ये था कि मतलब एक लड़का जो है वो अचानक से एक लड़की को देखता, प्यार हो जाता है, और प्यार ऐसा होता है कि अब जान देने के लिए भी तैयार है वो, एक ही बार में। ठीक है, एक ही लुक में फर्स्ट साइट में सब हो गया, तो ये रियलिस्टिक नहीं लगता है ना। और डायलॉग सारे बेकार थे, तो फ्लॉप हो गई मूवी। हाँ। और मतलब ये नॉर्थ इंडिया आदि को ना पुरुष। नॉर्थ इंडिया को ये लव हाँ ट्रायंगल, लव स्टोरीज़ ले डूबेंगे। हाँ, बॉलीवुड को लव मतलब स्टोरीज़ कोई ले डूबेंगे। क्रिएटिविटी नहीं है, कोई रिसर्च हाँ। नहीं है, ढंग से स्क्रिप्ट नहीं है। थोड़ी हुँ। रिसर्च करनी चाहिए थी मेरे हिसाब से। मैं मुझे लगा कि जो स्टार प्लस वाली महाभारत है, एटलीस्ट उन्होंने ड्रेसिंग वगैरह पे जो थोड़ा बहुत अच्छे से सोच के उन्होंने बनाया है, भले ही उसमें नहीं, उन्होंने ब्रह्मास्त्र में काहे की रिसर्च, वो तो फैंटेसी स्टोरी है। स्टोरी मतलब स्टोरी थोड़ा पहले वो अस्त्रों के बारे में भी उन्होंने वैसे दिखा, मतलब आप देखेंगे मूवी तो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि अच्छा, मैंने अस्त्रों के देखी नहीं, बारे हो में सकता है उस वजह से होगी। पर आई डोंट थिंक उसमें फैंटेसी स्टोरीज़ में रिसर्च के ऊपर इतना मतलब हाँ, ज़ोर देने की मतलब ज़रूरत पहले है, एक क्योंकि स्क्रिप्ट अच्छी होनी अगर चाहिए। रिसर्च में बहुत ज़्यादा बंध जाओगे ना, तो अच्छी स्टोरी नहीं सुना पाओगे। वैसे भी अच्छी स्टोरी मतलब नहीं जैसे सुनाई कि है उसमें उन्होंने। ऐसा कहा गया है कि हम इंडिया के एंशियंट कल्चर को दिखाना चाह रहे हैं, तो वैसा वो कुछ तो मार्केटिंग के रिप्रेजेंट। लिए कहते हैं।
वो हाँ मार्केटिंग के लिए कहते हैं ताकि संघी लोग आ जाएं देखने के लिए, वो असल में कोई भी नहीं करता। एंशंट हाँ कल्चर, अभी कल कोई पिक्चर बनाएगा बंदर के पेड़ के ऊपर चढ़ने के बारे में, बोलेगा ये भी प्राचीन संस्कृति के बारे में, लोग आ जाएंगे देखने के लिए। पर अभी क्या हो रहा है पता है, इतनी सारी पिक्चरें ये प्राचीन संस्कृति का ढोल पीट के बेची गई हैं कि लोग समझ हम्म, गए हैं कि नहीं नहीं, ये हाँ कुछ हमको हमें उल्लू बनाया बेच जा रहे रहा हैं, है। या जैसे जैसे बीजेपी वो बेच रही है नेशनलिज्म। हाँ, बस वैसे वही ये हो रहा लोग, है। हाँ अक्षय वही ये कुमार ने लोग इस भी साल में 3 पिक्चरें डाली है शायद, तीनों हाँ तीनों में जैसे से वो कोई भी अच्छी परफ़ॉर्म नहीं कर पाई। पृथ्वीराज भी हाँ, फ्लॉप हो गई वो भी। या जब किसी तो एक्टर या प्रोड्यूसर को लगने लगे कि मैं पिक्चर सिर्फ़ एक अच्छे टॉपिक पे बना लेता हूँ, हिस्टोरिकल या माइथोलॉजिकल, और मुझे और कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो पिक्चर फ्लॉप ही बस, होगी। तुम घटिया पिक्चर हाँ बनाओगे। हाँ, तो चलो ठीक है, यही एग्नोस्टिक अर्जुन आर्या, कुछ और ठीक ऐड है करना है ठीक तो है। बताओ, एक और व्यक्ति है वेटिंग में। बस यही ऐड करना था कि थोड़ा मतलब एक मतलब पूछना चाहता था कि मैं क्यों रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे बॉलीवुड वाले, क्यों ऐसा, मतलब बाहर के देशों में तो ऐसा नहीं होता लेकिन हमारे देश में मतलब ऐसा क्यों है कि ये कला में हम इतने पीछे जा रहे हैं। अभी एक चलिए अब थोड़ा बाद में बात करेंगे इस पर आपका मैं पॉइंट जानना चाहता हूँ क्यों ये नहीं कर पा रहे हैं। मैंने अभी तक जो बताया उसी का तो जवाब दे रहा था। आलस्य, मोस्टली आलस है, और बी लैक ऑफ फोकस ऑन स्टोरी है। तो हम्म। स्टोरी के ऊपर फोकस करेंगे, कैरेक्टर डेवलपमेंट फोकस करेंगे, इस बात पे फोकस करेंगे कि कैरेक्टर्स का इमोशनल कनेक्ट बनना ज़रूरी है कहानी के साथ, तो कहानी अच्छी होगी। अगर विजुअल इफेक्ट्स में बह जाएंगे तो नहीं होगा। दैट्स माय आंसर। अच्छा नेपोटिज्म इसका कारण नहीं हो सकता, मतलब कि एक ही जगह पर नेपोटिज्म बार इसका बार। कारण। सो हाँ हियर्स द क्वेश्चन टू यू, डू यू थिंक ब्रह्मास्त्र वुड हैव डन बेटर if it did not contain those two actors, and if it contained completely new faces? हाँ मतलब वो लोग तो कह रहे थे कि मतलब एक्टिंग जो है रणवीर कपूर का चॉइस बहुत गलत था इसमें। कोई हम्म दूसरे एक्टर्स भी लोगों ने बताए थे जो अभी जैसे अपरिचित के जो एक्टर थे विक्रम, उन्होंने बहुत हम्म। मतलब उनका तो मतलब अपरिचित मूवी देख के ही इससे बढ़िया एक्टिंग कोई नहीं कर सकता ऐसा लगने लगता था मुझे। अच्छा, तो मैंने देखी हाँ नहीं है, मैंने अपरिचित नहीं देखी है, मैंने विक्रम का काम देखा है दूसरा, पर मैंने ब्रह्मास्त्र नहीं देखी है, सो आई डोंट नो इफ नेपोटिज्म इज अ गुड पॉइंट। नेपोटिज्म तो एक वो ढोल बन गया है जिसको जब मिलता हाँ पीट डालता है। नेपोटिज्म के साथ साथ एक मतलब एक क्या आपको लगता है कि इसमें कुछ कैपिटलिज्म भी है क्या बॉलीवुड में, कुछ ही लोग इसको चला रहे हैं जैसे एकता कपूर है, वो तो उनको अभी कैपिटल, पद्मश्री भी दे बॉलीवुड दिया इज ए है। कैपिटलिस्ट ऑपरेशन। पिक्चरें लोग हाँ बनाते हैं ताकि पैसे बना सके, उसमें क्या है। हाँ नहीं मतलब एक कि कुछ ही लोग संभाल रहे पूरे इंडस्ट्री को, कोई क्रिएटिव व्यक्ति इसीलिए काम ही नहीं कर पा रहा है या उसको नहीं, अलाउ भी ऐसा नहीं नहीं कर लगता रहा मुझे, मुझे लगता है कि लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। पर जो लोग हैं बॉलीवुड में, ऐसा नहीं है कि उनमें टैलेंट नहीं है। हाँ, वो टैलेंट उनको अपने फैमिली प्रिविलेज की वजह से मिला हो सकता है। है। पर ऐसा नहीं है कि आलिया भट्ट इज़ अ बैड एक्टर। आलिया भट्ट इज़ अ गुड एक्टर। जो उनमें हाँ एक्टिंग एबिलिटी थी, वो एनहांस हुई है क्योंकि उनको बहुत हाँ सारे शाहरुख रिसोर्सेज़ है मिले। मतलब जितने मतलब एक्टिंग की दिक्कत नहीं है लेकिन मैं कह रहा था हुँ। जो डायरेक्टर है जो स्क्रिप्ट राइटर है क्या उसमें कुछ ऐसा है कि कुछ ही लोग उसको संभाल के चल रहे हैं और जो क्रिएटिविटी वहां नहीं आ रही है, स्क्रिप्ट में नहीं आ रही है, नहीं, ये डायरेक्टर में। जनरली बोला नहीं जा सकता ना, क्योंकि ऐसे बहुत सारे ओरिजिनल राइटर्स भी हैं बॉलीवुड में जो कि अच्छा काम, जो कि मतलब किसी फ़िल्मी फैमिली से नहीं है और हम्म जो लिख रहे हैं। सो मुझे नहीं लगता कि हम एक बड़ी पिक्चर के सक्सेस या फेलियर को हम्म। देख के बॉलीवुड बॉलीवुड ओवरऑल के ऊपर जजमेंट पास कर सकते हैं। और मुझे लगता है चलिए ठीक है फिर आज तो बात हो गई, पर मैं एक पॉइंट कहना चाहूंगा कि इस पर एक हुँ। रिसर्च होनी चाहिए कि ये लोग क्यों फेल हो रहे हैं, क्यों, क्या कारण है, कुछ तो है अंदर। नहीं तो हॉलीवुड हाँ। कर पा रहा है तो फिर बाकी सब देश कर पा रहे हैं अच्छे से। नहीं, एक्चुअली तो हॉलीवुड में हम लोग जिस प्रकार की बातें कर रहे हैं ना बॉलीवुड के बारे में, हॉलीवुड में भी लोग इसी प्रकार की बातें करते हैं। कहते हैं कि आज से 20 साल पहले अच्छी पिक्चरें बनती थी, क्या गलत हो रहा है आजकल? ये हर हाँ जगह होता है, ये हर जगह होता है। पब्लिशिंग में हो भी होता सकता है। जो लोग आजकल के फैंटेसी नॉवेल्स पढ़ रहे हैं, वो कहते हैं यार 25-30 साल पहले वाला फैंटेसी बहुत अच्छी थी। है। तो ये कॉमन चीज़ है, इसका किसी इंडस्ट्री या देश के साथ कोई क संपर्क नहीं है। अब जैसे लेकिन एक चीज है कि भाई ऐसे राजा मौली की पिक्चरें बहुत अच्छी चल रही है, बहुत अच्छे से हिट हो रही है, बाहुबली है, फिर हुँ। ये तो उनका कुछ तो है, तो मतलब कोई तो है जो ऐसा ही नहीं, रैंडम कारण नहीं हो सकता है, कुछ तो ऐसा रीजन है जिसकी वजह से ये लोग फेल हो रहे हैं, बोला शमशीला ना, फेल हो। एसएस राजमौली की फ़िल्मों में सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये है, विजुअल इफेक्ट नहीं है सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट। सबसे हाँ स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि वो लोगों को डीप इमोशनल कनेक्ट फ़ील करा पाते हैं। हम्म ये बाहुबली में भी किया था। उनकी फ़िल्में प्रॉब्लम फ्री नहीं है बाय द वे, प्रॉब्लम बहुत हम्म हैं। बट द हाँ थिंग दैट ही ऑलवेज़ गेट्स राइट इज़ दैट लोग उनकी फ़िल्मों को देख के हँसते और रोते जेनुइनली हैं। कोई हाँ आयरॉनिकली नहीं देखता उनकी पिक्चरों को। हाँ बाहुबली का सबसे फ़ेवरेट सीन मेरा, वो नहीं है जिसमें कोई फाइट्स हो रही थी। मेरा सबसे फ़ेवरेट सीन है जब
ये दोनों राजकुमार बड़े हो रहे थे और एक राजकुमार एरोगेंस दिखाता था और दूसरा अपने मतलब वो कटप्पा और दूसरों के साथ बैठ के खाना खाने लगता था और कहता तुम मुझे खिलाओ, और कटप्पा कह रहा था पर आप विनम्रता राजकुमार हैं। विनयता दिखाता था। एग्जैक्टली वो उसका सबसे स्ट्रांग पॉइंट था मेरे लिए। उस प्रकार के सीन्स की वजह से ये फिल्में बेटर परफॉर्म करती हैं और ये लोग तो विजुअल इफेक्ट्स में बह जाते हैं। मतलब एक कैरेक्टर को ढंग से डेवलप करना चाहिए, कैरेक्टर में जो गुण हैं उसी के हिसाब से उसकी पूरी जो स्टोरी लिखी जाए कि इसमें ये गुण है, विनयता है तो कहीं पे ये क्रोध ना करे, इस तरह से एक सेट किया जाए तो ठीक है। अब चलिए ठीक है चलो फिर ठीक है आपसे अर्जुन, अगली बार बात करते हैं। मैं तो वैसे भी 1 घंटा 25 मिनट हो चुका है। हेलो, अच्छा चला गया। ओके, सो बिफोर आई गेट टू द लास्ट कॉलर, I will thank Bond007 for the $8 super sticker. Thank you very much. And Kailash Mahavar for the 100 rupee super sticker. Thank you very much, Kailash. There are a couple of comments here also. Samad says it is also some sort of golden age syndrome, as if the era in which one lived is the best when it comes to movies, songs, etc. Yeah. मैं अश्विन के साथ ये एक पॉडकास्ट करता हूँ गटर स्पेस करके, एंड आई ऑलवेज से am I not liking this because this thing is bad, or is it because I'm a cranky old man? And Ashwin tells me it's bad. It's bad. And I tell him, are you sure you're not a cranky old man? And that's when, you know. Anyway, Dhruv is here. Hi, Dhruv Krishnan. Thank you for the $2 super chat. Much appreciated. Sumana says, we tend to remember good things from the past over bad. Yeah, yeah. That's the thing. श्रेयस सेज इंडिया में साईफाई का इशू ये है कि पैंडरिंग शुरू हो जाती है। टेक एनी पॉपुलर सुपर हीरो मूवी, रावण, क्रिश एटसेट्रा, हर जगह भगवान एंड मिथोलॉजी घुसाना ही है। व्हाई नॉट यूज इंडियन कॉमिक्स? इंडियन कॉमिक्स में भी भगवान घुसे हुए हैं बेटा। तुमको पता चलेगा जब तुम राज कॉमिक्स के पिछले 10 साल के मतलब स्टोरी आइडियाज को एक्सप्लोर करोगे। बट विल टॉक अबाउट दैट सम अदर टाइम। द लास्ट कॉलर इज पीएमएम। हेलो विमो। हेलो। हाँ, थैंक यू मुझे अपनी फॉर आवाज की टेकिंग एको आ रही है पीएमएम। हाउ इज दैट? अच्छा, क्या एक करूँ काम मैं? करता हूँ, यू स्पीक एंड व्हेन यू आर डन यू टेल मी एंड देन आई विल स्पीक। Okay. First, this is my first stream, and I really want to ask you something that I have seen a lot of atheist debates and also theist debates, and both are very, I think both are very dangerous, and वो वो लोगों को बोलने ही नहीं देते। हाँ, एक ने क्वेश्चन किया कि बस उस क्वेश्चन में एक आधा वर्ड भी अगर गलत हुआ वो उसे कोई पकड़ लेंगे। कि बस नहीं, ये क्यों बोला, ये क्यों बोला। इसकी वजह से डिबेट का मतलब ऐसा लगता है कि कोई मतलब ही नहीं है, तुम बस फाइटिंग करने का आए हो। और मैंने अभी एक वीडियो देखा साइंस जर्नी पे, आई थिंक 8-9 महीने पुराना है। तो उसमें ये था कि हमारे जो सोशल रिफॉर्मर्स थे, उन्होंने जो कास्ट के ऊपर काम किया या फिर नहीं किया, उसके बारे में था। तो मुझे पूछना था, जैसे राजा राममोहन राय, आर्य समाज और एनी बेसेंट एंड अदर, इवन गांधी के बारे में वीडियो था। तो मेरा कहना है कि आई नो कि मैं मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहा हूँ, तो मैंने हिस्ट्री वगैरह पढ़ी है। तो अगर टेक्निक राममोहन रॉय के बारे में पूछना है, आई नो कि उन्होंने कास्ट के लिए काफी कम काम किया, बट डज दैट मतलब उससे उनका वुमेन्स और चाइल्ड मैरिज पे जो काम किया है उसका इम्पैक्ट कम होता है क्या? मेरे को ये पूछना है। इट शुड नॉट बी ना, राइट? डिपेंड्स ऑन द कॉन्टेक्स्ट, राइट? मतलब ओके, टिग्मांशु, सॉरी टिग्मांशु बोल रहा हूँ, पीएम पे टिग्मांशु गवर्नमेंट मैटर। मैं तुम्हें म्यूट करता हूँ, ठीक है, बोलने के। ओके। So depends on the context. If the conversation is about caste and Raja Rammohan Rai is held up as someone who did a lot of work for women's emancipation, और फिर लोग कहते हैं कि he should not be, the thing is this, historical figures कभी भी एक कलर में पेंट नहीं हो सकते। उनमें कुछ अच्छी चीज़ें थी, कुछ बुरी चीज़ें थी, पर हम लोग कई बार उनको एक कलर में पेंट कर डालते हैं। मतलब ये आदमी ये गलत हो ही नहीं सकता, महान है। और जब हम वो करते हैं तो हम उनका जो शैडो एरिया है, जो कि उनकी में प्रॉब्लमैटिक था, उसके बारे में बात करना मुश्किल हो जाता है। और अगर कास्ट जैसा कोई टॉपिक है, वी नीड टू कीप इन माइंड कि ये चीज़ में लेयर्स हैं।
There is casteism happening by upper caste men against lower caste, so-called lower caste men. There is casteism happening against upper caste men, lower caste, so-called lower caste men by upper caste women. There is an entire movement called Dalit feminism, and it is staunchly against Savarna feminism. सो अ लॉट ऑफ थिंग्स नीड टू बी अनपैक्ड देयर. हम लोग जिस लेवल पे डिस्कशन को एंटर करते हैं, हमें कभी-कभी लगता है कि ये सिंपल है। ये आदमी अच्छा है, ये आदमी बुरा है, ये आदमी ने कुछ अच्छी चीज़ें की थी, इसके बारे में बात करना ज़रूरी है, और अगर वो लोग कह रहे हैं कि इसने जो बुरी चीज़ें की थी वो इतनी वो हैं, तो उनको हम लोग कभी-कभी इग्नोर कर सकते हैं. नहीं, आई थिंक अगर हम सो कॉल्ड, लेट्स जस्ट से डीबीए, ओके, दलित बहुजन आदिवासी, इफ हम दलित बहुजन आदिवासी लोगों के लिव्ड एक्सपीरियंस से गुजरे नहीं हैं, तो जब वो कहते हैं कि तुम जिसको महान समझते हो वो महान नहीं था, तो हमारा काम है सुनना, राइट? तो अगर हम सुनने से इनकार कर देंगे तो हम समझ नहीं पाएंगे कि उनका प्रॉब्लम क्या है, उनका पॉइंट क्या है. या आई हैव अनम्यूटेड यू. हाँ, नहीं, आई एग्री, टोटली एग्री कि डेफिनेटली नो वन इज परफेक्ट, एवरीवन हैज गुड साइड्स एंड बैड साइड्स. हाँ, सो या आई थिंक कास्ट के कंटेक्स्ट पे देखा जाए तो हाँ, ही हैज नॉट डन लॉट ऑफ थिंग्स, बट देयर मुझे द वे he is portrayed, yeah, it's like I have seen here a lot of many people is saying he was agent of English, and now he is anti-caste, he is agent of Brahman. Even for Gandhiji, I mean, Gandhiji has got so many titles now in today's India. He was he was agent of English, yeah, anti-Hindu, anti-Muslim, anti-Christian. I mean, everything. I don't know why. You Why? either is that thing from the Batman film, right? You either die a hero or you live long enough to see yourself be the villain. So I think that's what happens. मेरा basic rule ये है कि if criticism of Gandhi is coming from Dalit quarters and they're pointing out that he was somewhat casteist, then that is valid criticism because he was. If Yeah, yeah. criticism of Gandhi is coming from Sanghi quarters, Savarkar fans and Godse fans, then that's bullshit criticism and I'm not going to pay any attention to it. That's I think that's a sane position to take on any historical figure, because they were heroes to some people, they were villains to some people, and the people who they were villains to are going to be in two categories. Not everyone hates Gandhi for the same reason. Some people's hate is justified, some people's hate is not justified. That is true. That is true. That's what I wanted to ask. Okay. That's it, sir. Yeah, thank you. I do also want to talk about something you brought up previously, which was that when atheists and theists talk, they don't give each other time That's to why I speak. like your debates. That's why I came okay. here. Not there. Okay. You listen. So I think there is a reason behind that, which is that often when religious people present an argument, in every sentence, in every word, there are 5 implications that are just smuggled into the conversation. And if you don't stop them right there, it grows into a tree. Like this branch is going there, this branch is going there, this branch is going there, and you can't grab all of it together. So you have to stop them when it is growing. That is why I think most of these interruptions happen. No. Even on both atheist channel and theist channels, I've seen both debates and both do that. I don't go to theist channels. Which channels are you talking about? No, Sanatan Shiksha something. No, don't name them. Okay, sorry. No, I was that's just rhetorically asking. Cool. Yeah. Thank you. That's what I wanted to ask. Yes, definitely. Our, the independence, independence activists were both good and bad. That's what I wanted to ask. And also, And like, people, the independence movement cannot be removed from the context of the caste of the people who we think of as heroes. Gandhi was upper caste, Tilak was upper caste, Nehru was upper caste. And there are many tribal and Dalit freedom fighters whose contributions don't get mentioned enough. So it is natural for them to be angry about this shit. Exactly. So when they are angry, we should just open our ears and listen. Yes. Even just now that I was reading in history that Mahatma Phule, when he died, the newspaper by Tedak didn't even mention his death. Yeah. So yes, I agree, totally agree. And yes, that's it, sir. Thank you. Thanks, PMM. Thank you. Bye-bye. Bye-bye. Good night. Good night.
That was the last caller of today. 1 घंटा 35 मिनट का लाइव स्ट्रीम चला. I will read some comments before I end it so that Tigmanshu asks, who's your favorite character from Raj Comics? ध्रुव, I think. वो सबका फेवरेट वही है यार. जैसे बैटमैन सबका फेवरेट रहता है वैसे ध्रुव मेरा फेवरेट है. Hold on, before I end, let me just turn on the music. It says, I'm not against the usage of mythology or religious elements. वेस्ट में भी होता है, थॉर, गोस्ट राइडर एक्सेट्रा, बट उसके अलावा भी है ना स्पाइडरमैन, आयरन मैन टाइप चीज़ें, वैसा कुछ भी होना चाहिए यहाँ. आई एग्री which is why I keep telling people to read books. Don't expect everything to come in the form of films. In books and comics, a lot of original ideas are being explored. In fact, my friend Ashwin Kalmane recently wrote a comic series called Raj Rahman, and you can get it from the Bullseye Press website. It's a detective series. Shreya says, nobody owes it. I'll add to my watch list. At that type my point, I remembered Bhavesh Joshi, to which there was a decent movie. So, kuch hai, but not in the popular ones. Nishant says, I heard chess player Magnus Carlsen say this. I appreciate what people can do and not necessarily the people themselves. Do you think that you can isolate both? Sometimes you can isolate both. Sometimes you can't isolate both. It depends on the person and the case. Tigmanshu says, Vimo, do you know why Meghnad is not streaming? He was streaming games, right? I don't know what happened. Maybe he changed his mind. He's posting reels and shorts these days, and he must be busy with his work at IBM. Tigmanshu says, परमाणु की ओरिजिनल स्टोरी क्या थी? परमाणु की ओरिजिनल स्टोरी ये थी कि ये क्या आदमी है, इंस्पेक्टर विनय. He is given superpowers by a professor. He puts on a costume made of asbestos. And something happened. I think Parmanu became Parmanu at a very young age, but then he grew into an older man and eventually became a police inspector and all that. I have vague memories of it. I read it quite some time ago. Confused Ape says, my favorite was Nagaraj. Krishna says, since recently was Gandhi Jayanti, I would like to know your views on Gandhiji. I just gave them to you. I think Gandhi was a freedom fighter who contributed a lot to the freedom struggle. However, there are significant criticisms of him coming from the Dalit quarters about him being a supporter of caste. One thing we need to keep in mind is that he was someone who grew throughout his life. So whenever you read an opinion by him, also take a look at what age he wrote that. The man kept writing his whole life. So if there is an opinion by him at a younger age, try to find out what his opinion on that matter was when he was older. Tigmanshu says, my favorite is Doga. Okay, Tigmanshu, sorry. Random Flux says, any opinion on Sam Harris's moral landscape? Were you convinced by the scientific approach to morality? No, I was not. I do not think science can provide a foundation for morality. I think whatever moral fabrics human society has, it's a product of human social evolution. Sam Harris seems to be of the opinion that I don't want to go into the breakup of the idea basically, but I don't agree with it. Maybe we can talk about it some other time. Samad says, Captain America all the way. Okay, then I will end the episode now. Otherwise, my Raj Comics and comic book ideas ke upar hi baat karta rahunga. I'll remind everyone before going that if you want to support this program, you can click the join button below and become a member of this channel. This show happens on Wednesdays at 9:30 p.m. and Saturdays at 9:30 p.m. Today has been October 5th, Wednesday, 2022. The show ran for 1 hour 40 minutes roughly. And if you want to support it, you can become a member by clicking the join button, or you can support the show at patreon.com/Vimo, where you can become a monthly or an annual member. If you don't want to become a monthly or an annual member, you can simply go over to vimo.stck.me and make a one-time donation there by clicking the support button. If you want to watch my videos, you can do so at youtube.com/Vimo, which is my main channel. I mostly post shorts there, but also sometimes videos. If you want to listen to the audio version of this podcast, you can do so at www.vimo.in. That's where all the audio episodes are available. Also, links to all the audio apps where the show can be listened to. There is another way of explaining. There is another way of supporting this show. It's by buying merch, t-shirts, hoodies, and mugs. You can get those at kadakmerch.com/Vimo Live.
You can also go to the main page of this channel and click the store tab where all the products are listed. And clicking on any one of them will take you to the Kadak Merch page. The Kadak Merch page itself is at kadakmerch.com/vimolive. And if you want to support me even more directly, my UPI ID is vimo@upi. Simple. Until next time, I will take your leave, and I hope that you have a great week ahead. I hope you have a great half a week ahead. The next time I see you, it will be Saturday at 9:30 p.m. If you're not subscribed to this channel, I don't know why people don't subscribe. Subscribe to this channel and click the bell icon. If you're watching on Twitch, then please click the follow button. I'll see you on Saturday. Thank you, everyone. Bye-bye. Good night.